giving me the access to share your screen as well, and also making you as a co-host. Yep. In any case, I just lose my internet connection, so you can actually can carry on that. So, guys, okay. As you know, guys, my name is Ritik, and I'm gonna be a host for today's session, and it's gonna be about how to use Balsamic. So, guys, आप सबको Balsamic tool तो पता ही होगा, because almost the people who are into this cohort, they already have gone through the certain tools, but not Balsamic, right? They know about the wireframing, they know about how wireframing works, right? But right now we have Nevide with us. He's actually right now working in a Paytm, right? And he have a very, very great journey, right? He's a hustler, he's an entrepreneur in his mindset. He understands the things very well, and at the same point of time he worked with a top mind right now in a top, maybe I don't want to have the word with me, but the top people in the startup ecosystem, right? And the toughest people as well. Top and toughest both. And in that way, he's gonna be sharing his knowledge with you. And at the same point of time, also gonna be learning how to use a Balsamic as a tool, right? And which is a very important tool for a aspiring product manager. So whenever you're going for an interview, people gonna be asking you all these questions, that have you ever gone through the Balsamic, have you ever used Balsamic, or any other tool like that, right? And that's where we gonna be helping you out, guys. And also, it's not going to be about the theoretical session, because as you know, wireframing theoretical nahi ho sakti. So we're gonna make sure that it's gonna be a practical. And guys, if you have any doubts, if you feel anything which you want to ask, that's the beauty of live lecture. You can actually can ask on the spot. So before starting up the session, let's do one thing, Nevide. We're gonna be taking a small brief about our students, and from our students, and then we can start with the session, right? So, Amazing. guys, we can start with a small introduction, like what's your name and why you want to be a product manager, and also you can talk about uh, maybe anything, right? So it's just a small introduction. So where you're working right now, and even if you can just talk about maybe anything. So yeah. So can we start with Priyam? So we do have a lot of people with us, but we're going to be taking a small introduction in just case maybe they can get the idea of people's background, right? So Yep. that's the main agenda. So Hi basically, Navidya. My name is Priyam. I have recently graduated Mhm. from a tech background. Mhm. So while solving multiple problems, I started working around with the entrepreneurs for converting their innovative ideas into the business products. Along Mhm. with Ali and his company, North Star Innovations, Mhm. we tried to understand more about the products, Mhm. and that's when we thought of okay, this is the boot camp, or this is the journey which we would like to go forward with, Mhm. where we started understanding the pain points of Mhm. entrepreneurs, where they were facing the issues and the product itself. So that's what motivated me to start with the product management. Amazing, amazing, amazing. guys, also you don't need to talk about कि आपने boot camp क्यों select किया. You can also talk about कि आपकी journey आपको product management में क्यों जाना है, right? So let's talk about Ali now, because Priyam is already introduced Ali now. So Ali, if Yeah, you can just give us a quick brief about yourself, and we can just. sure, sure. Hi, Navidya. So Mhm. basically, I'm Ali Asghar. I've again recently passed from engineering from Bombay. So Mhm. what we thought after interacting with a lot of people and entrepreneurs and small businesses was that they already had good, unique, and innovative ideas, but it was really difficult for them to create products and get and try it out into the market. So that's Mhm. where we thought that we could provide our value and our experience and bring in our technical skills and help Mhm. them actually convert their ideas into a tangible product which can be again given and launched inside the market, and which would help them grow and scale their business. So we basically focus on digital transformations of traditional processes, so that entrepreneurs can bring out the ideas to the market, and also those ideas can impact millions of lives. So that is our main goal. Okay, so you So are the that's what entrepreneur moved for entrepreneurs, right? kind of right. Yeah, Right. cool. So can we? So that's what. Ha. So can we have Vivek with? So Vivek, could you just brief about yourself? Hi Navidya. So Mhm. I'm currently working in an edtech space as a growth manager. Mhm. So it has been almost 7 years of experience that I have.
Mhm. right from being a software engineer to an entrepreneur in the edtech space, and now I'm currently working as a growth manager in edtech. So that's what I am right now. Um, so EdTech specifically, you take care of a lot of B2C stuff, right? Uh, B2C and B2B both. okay, okay, got it, got it. He's a So gold mine of connections, bro. Never from the IT and everyone. He's having a very good network. amazing, amazing. So amazing, right? I mean, I always great to speak with growth managers, right? I mean, you guys drive the acquisition for us, and then all the matrices fall with us. If acquisition falters, nothing else matters. So Yes, that's so what we try to believe and work. yeah, you're believing, right? That's great. At least you are believing, Vivek. That's a very good thing. People don't believe even, right? So let's talk about Shripad now. Shripad, if you can just give us a small introduction about you, man. Yeah, hi Nevidya. Mhm, So I'm working in a fintech startup mhm, and currently leading a let's say QA team and the product support team. And mhm, I'm carrying around 6 years of experience. mhm. Yeah. So, Got it. So, Shripad, right? So I've worked with a lot of QAs, right? And I would tell you, right, some of the smartest product managers that I've ever seen are from QA background. Reason for that is they have the reverse engineering skill. right. Yeah. Exactly. Yes. Same thing motivated me as well. Like we are as a QA, you are at the end of the cycle, right? So product manager are those who drives the system. So I Hmm. want to be in a driver's seat. So that motivated me. Currently now I'm in a what you can say back seat. So I want to upgrade myself and do the Yeah. yeah. Perfect, perfect, perfect. I hope you're gonna be like you're gonna be sitting on a driver's seat very soon, Right. Shripad. Yeah, yeah, sure. So Yeah, exactly. and you're gonna be understanding the pain then. Right, yeah, exactly. So can we have Shrikar with us? Shrikar, can you just give us a quick brief about you, man? Hi Navedya, myself I am Srikar. I'm Hmm. currently working in a B2B lead generation company Hmm. and taking care of processes and like creating target audience data, other things. So Hmm. I have a little bit of experience in startup, like building my own product and then a market strategy around it. So it made me to go towards a product oriented thing. Got it. Got it. So, So by the way, right, B2B lead generation is actually one of the toughest roles. Just to give you context, right, the highest paid people are people who generate B2B leads Yeah, because B2B is inherently a subscription game, yeah, right? yes, So more subscription it kind of comes in. Getting a B2B client tracked in is one of the toughest things in the industry. A lot of leaders are actually there on that side, including Satya Nadella's and the Sundar Pichai's of the world. They are known for their ability to kind of do kind of strategic partnerships yeah. that matters the most. So it's kind of really exciting for you to kind of then move on to startups. Thank you. perfect, perfect. So guys, we're gonna be take the last introduction. I think it's gonna be takes a lot of time in introducing, right? So so Aishwarya, can you just please introduce yourself and we can just start with the session then? Um, Hi, I'm Aishwarya. I just got graduated very recently from Manipal University, Jaipur. And before that, I have worked with entrepreneurs and I like the process of creating things Mhm. and especially technical apps, you know. And I just thought for myself, I just don't want to take risk at this point of time by being an entrepreneur, but I want to have like a sense of ownership or like I just want to be giving my inputs, so that's why I've chosen product management. In short, Aishwarya wants to save her money and she wants to play the money on the product side where she can actually go and work like a product manager and can understand the things and then can start the startup. Like maybe can start the comp as a competitor, right, Aishwarya? First of all, I want to gain experience and then play. Like this question is very common, right? So during the interview now, we always ask people that okay, so so people want to become an entrepreneur, right? So and we always speak then ki boss job के साथ साथ entrepreneur कैसे बनोगे?
ठीक है, कैसे करोगे? So like they don't share ki in your startup we're going to be using our entrepreneur mindset. What they always talk about that side में कोई business कर लेंगे. मैं कह रहा बॉस, अगर साइड में बिजनेस ही करना है तो यहाँ पे क्यों आ रहे हो? So that's also the case, right? So guys, we do have right now I'm just going to be introducing a new member in Brightigo. She's Anamya, and she's going to be working as a webinar moderator for Brightigo, and she's very very excellent, right? And Anamya, if you can just introduce and maybe can say hi to the people of Brightigo. These guys are actually student, but yes, these are also the family of Brightigo, right? So please, Anamya. Yeah, hi. Thank you so much for your kind introduction. Hi, everyone. I'm Aname. I just joined Brightigo as a webinar moderator, and I'm really excited to see how this first session plays out. Thank you. Perfect, perfect, perfect. So again, guys, we are growing, and we make sure that we're gonna be give you a best quality content, right? So Navide, handing over the session to you, Yeah. so you can just share your screen, or maybe you can just introduce, or maybe something, right? Yeah. So guys, let's get on to the business, right? So uh, uh, so uh, before just starting, right, I just want to give you one. So all of you have seen aircraft, right? Aeroplane तो सभी ने देखा है, right? सब बैठे भी होंगे शायद सर. हाँ, सब बैठे भी हैं, right? सो एरोप्लेन में जब आप बैठते हो, राइट, तो जैसे एयरक्राफ्ट के जो मेन कंपोनेंट होता है इंजन, राइट? सो इंजन, जो इंजन होता है, इट्स वन ऑफ द टूल्स व्हिच अलाउज द एयरक्राफ्ट टू टेक ऑफ, राइट? Similarly, it is with wireframing. It's the ninja tool you need in your toolkit, right? So, and that's why we kind of try to structure it so to have a live session with a live problem statement, right? The way we're gonna go about the session is in three parts. So first we'll try to understand the problem. Second, we'll go about where wireframing helps. पूरी problem wireframing से नहीं solve होती. प्रॉब्लम का एक पार्ट, एक बहुत क्रूशियल कंपोनेंट वायर फ्रेमिंग सॉल्व करता है, हम उसको भी देखेंगे कि हम क्या चीज को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज क्या होता है कि बहुत बार लोग जो है वो सीधे जंप कर जाते हैं, हमसे वायर फ्रेम बनाते आते हैं. अनफॉर्चुनेटली वायर फ्रेमिंग आपको पता होना चाहिए कब रिक्वायर्ड टूल है, राइट? जैसे कि अगर आपको कपड़ा सिलना होता है, राइट, तो आप सुई यूज करोगे, आप चाकू नहीं यूज करोगे. बिकॉज इफ यू यूज अ नाइफ, it goes to kapda aapka fat jayega, right? It will be tattered. Same thing happens, right, when you apply a wrong tool to at a wrong place, right? So that's what we'll do, and then we'll jump on to the balsamic tool, which is the de facto industry standard tool. Sounds good, guys? Shall we kind of start with the presentation and followed by the hands-on tool? Yes, sure. Yes. By the way, any point of time, right, you can stop me, right? You can ask me, right? A lot of time I'll drive both by आपसे प्रॉब्लम का कोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड करने में, एंड समटाइम्स आई विल आल्सो यूज एग्जांपल्स. Reason for that is I want to keep it as crude as possible, and the idea for me is not to cover anything for you. I don't cover stuff ever. I kind of try to uncover few things. उसके बाद आपको देखना है कि उसकी कितनी डेप्थ है, राइट? सो माय आइडिया इज टू अनकवर फ्यू थिंग्स फॉर यू. सो so as I told you about the agenda, right, हम problem statement देखेंगे, wireframe बनाना सीखेंगे, and we'll also talk about balsamic, right? So very simplistic agenda that we are keeping right now. So uh, let's go on to the problem statement straight away, right? तो व्हाट्सएप तो सब चलाते हैं, राइट? डी फैक्टो, अगर किसी पीएम से पूछे ड्रीम कंपनी क्या है, अगर उसका आंसर व्हाट्सएप नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है, राइट? सो उसका कारण है व्हाट्सएप के पास जो डेटा है दुनिया का, वो और किसी के पास नहीं है. एलॉन मस्क जैसे $200 बिलियन वाले आदमी को भी व्हाट्सएप के खिलाफ ट्वीट करना पड़ता है. एंड आप भी जानते हैं, राइट, कि व्हाट्सएप इज समथिंग, राइट, यू लाइक इट और हेट इट, यू कांट इग्नोर इट, right? So it's that kind of tool, right? And so problem statement is आप product manager हो WhatsApp के, and
आपको जो है बहुत सारा क्वालिटेटिव फीडबैक आता है, राइट? ऑब्वियसली प्रोडक्ट में दो टाइप के फीडबैक होते हैं व्हाट्सएप जैसी कंपनी के लिए। एक तो हो गया कि क्वांटिटेटिवली लोगों ने वहां पे ऐप स्टोर में रेटिंग दे दी, राइट, विच इज अ क्वांटिटेटिव फीडबैक, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक comes in, right? So both of them are important. Where our ratings give you, so it's like diagnosing a problem, right? Like छींक आना, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, राइट, तो आपसे डॉक्टर क्या पूछता है? आपसे, आपको सर्दी हो गई, आप डॉक्टर के पास जाते हो, सो आपसे डॉक्टर क्या पूछता है? एनीवन, राइट? आपको सर्दी हो गई है, वो Like स्ट्रेट, doctor asks you first of all like कितना, what are your symptoms, like कितना है, what हाँ, how severe it is, and कुछ ठंडा खाया था क्या, like how कैसे हुआ था, originate कैसे हुआ था. एग्जैक्टली। सो डॉक्टर क्या कर रहा है जब डायग्नोसिस कर रहा होता है ना, तो वो जो है बंदा दो चीजों पे ध्यान दे रहा होता है। वो, आप, उसको पता है कि आपको सर्दी आई है, राइट, उसने एमडी भी करी हुई है, उसने रॉयल मेडिकल कॉलेज से फेलोशिप भी होगी उसके पास, ज्यादातर डॉक्टर जैसे दिल्ली में है, उसको पता है। लेकिन वो आपसे क्या निकालना चाह रहा है? वो आपसे कुछ ना कुछ क्वालिटेटिव चीजें भी निकालना चाह रहा है, कुछ और ऐसा तो नहीं कि तेरे को बुखार भी आया था साथ में, या हो सकता है आपने कल किसी वैक्सीन का टीका लगवाया हो, राइट, वैक्सीन को आपने एडमिनिस्टर करा हो, तो उसके इफेक्ट थे, राइट? सो ऑल, या ऐसा तो नहीं कि आपको एलर्जी की वजह से छींक आई हो सकता है आप गार्डन में घूम रहे थे, वहां पॉलेंस होंगे, राइट, एंड देन यू काइंड ऑफ प्रोसीड विद, सेम इज हियर विद क्वालिटेटिव फीडबैक। इट्स काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लुक एट दैट। सो आप पीएम हो व्हाट्सएप के और आपको एक क्वालिटेटिव फीडबैक आता है कि hey, it would be great if we are able to schedule events, meetings या meetups through WhatsApp groups, right? I'm sure आप सभी ने देखा होगा, राइट, व्हाट्सएप में हम जब यूज करते हैं लॉट ऑफ टाइम, राइट, लाइक अभी मेरे को जब ऋतिक के साथ ये सेशन शेड्यूल करना था, राइट, तो मैं पहले गूगल पे जाके कैलेंडर शेड्यूल करता हूँ, और फिर बहुत मेहनत होती है, राइट? आई मीन, व्हाट इफ व्हाट्सएप इटसेल्फ कुड ऑफर दैट फंक्शनैलिटी? हे, शेड्यूल अ मीटिंग विद ऋतिक एट 8 पीएम, और 8 पीएम में व्हाट्सएप ही मेरे को ब्लिप मार दे, राइट, कि हाँ भाई, यू हैव अ मीटिंग देयर। सो दिस इज वन ऑफ द क्वालिटेटिव फीडबैक यू गॉट कि यार ये फीचर अगर होता तो बहुत अच्छा होता। सो नाउ आपकी जो टीम है, राइट, उसने बेसिकली कुछ तरीके लगा के वैलिडेट किया रहा है कि हाँ, देयर इज अ नीड फॉर दैट फीचर। सो हम जब किसी का फीडबैक लेते हैं, राइट, तो हम डायरेक्टली ऐसे ये नहीं कि हम सोल्यूशन बनाने में लग जाते, वी गो अबाउट वैलिडेटिंग इट, बट दैट इज समथिंग आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस एक्सरसाइज, राइट? सो आई एम जस्ट कीपिंग इट सिंपलर कि योर टीम हैज ऑलरेडी वैलिडेटेड इट, एंड नाउ योर लीड, जो आपका सीनियर पीएम है, वो बोलता है कि यार we want to implement it somehow, right, and help us kind of implement that. So this is the overall problem statement. Any questions here? Problem क्या है? किसी को clarity इसमें चाहिए है? Because यहाँ पे हर एक एक वर्ड जो है वो आपके लिए बहुत important है, right? So actually, I wanted to ask one thing, Navedya. Hmm? Statement you said you are able to schedule events, meetups, meetings through WhatsApp. Hmm? So how would it actually work? Like, is it you create a group and then you set a reminder for a particular, like, giving the location, etc. और फिर वो time पे WhatsApp reminds you something वैसा है? So see, ये आपको कस्टमर से फीडबैक आया है, राइट? अभी Okay. जब आपको कस्टमर से फीडबैक आता है तो वो आपको कस्टमर ये बताएगा क्या? वो तो ये बोलेगा यार ग्रुप के अंदर बस मीट, मेरे को आप फीचर बस ऐसा दे Want दो, मैं मीटिंग शेड्यूल कर schedule दूं। meetups or meetings through WhatsApp basically. So हाँ, his हाँ, उसको मीटिंग शेड्यूल करनी है, और व्हाट्सएप ग्रुप में उसने बोला था कि यार चलो ग्रुप में हम जो है, ग्रुप में अगर हूँ मैं, 3-4 लोग होते हैं क्योंकि वन ऑन वन ईजी होता है, राइट, बट हाँ. ग्रुप में है, ज्यादा लोगों को बुलाना है, तो मेरे को ये प्रॉब्लम आती है। Okay. Okay. So basically virtual meeting, right? Or means audio, video meeting or कुछ ऐसा. हाँ, हाँ, सी इट कैन गो एनी डायरेक्शन, राइट? मे बी वो वीडियो मीट हो, मे बी उन्हें आपस में मिलना हो, राइट? जैसे आप गूगल कैलेंडर में डाल देते हो, अगर मैंने डाल दिया मीट ऋतिक फिजिकली एट XY प्लेस इन दिल्ली, राइट? Right. वैसा WhatsApp पे करना है.
हाँ, वैसा हमें कुछ व्हाट्सएप पे भी जैसे गूगल कैलेंडर होता है, राइट? Right. Got it. Got it. सो ऐसा कुछ हमें करना है व्हाट्सएप के लिए, राइट? नाउ एनी I अदर have one क्वेश्चन? question. I have one question. Mhm. How does we do the validation? Like we do the validation, or there is a different team who do the validation? सो टिपिकली राइट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, राइट, नेक्स्ट स्लाइड में एग्जैक्टली ये कवर्ड है कि Okay. वायर फ्रेमिंग कहाँ फिट होती है और इसके पहले होता क्या है बिहाइंड द सीन। ये सारा काम पीएम ही करता है, पीएम की टीम करती है, राइट? Okay. सो तो लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, राइट, तो आप जो है इसको देखो, पहले तो थॉट बोला है ना किसी ने, तो आप जो है ये पहले डायग्नोस करोगे एक्चुअली में प्रॉब्लम है कि भी कि नहीं, राइट? एक जन के बोलने से तो मैं व्हाट्सएप का चेंज नहीं कर दूंगा ना, जिसके 500 मिलियन से ऊपर यूजर्स हैं। Yes. So there are a bunch of techniques, right, which I can also share with you guys, right? But इस session में I don't want to keep it that in that depth right now, right? I for the reason कि हमारा टूल अब हमारा अभी फोकस जो है वो टूल साइड पे ज्यादा है, राइट? बट टिपिकली मैं जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ होता क्या है। होता ये है कि हम सबसे पहले ये करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, राइट? जो कि मैंने अभी आपसे किया, राइट? अभी मैंने आपसे पूछा, राइट, इसमें कोई क्वेश्चन है कि नहीं है, राइट? अभी उसको करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि हम क्या क्लियरली कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं। मैंने जैसे आपसे पूछा, राइट, वैसे ही आप कस्टमर से एक बार एक्चुअली में बात करते हो कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो, राइट? जस्ट टू रिकन्फर्म इट, राइट? अभी आपको ने जैसे प्रैक्टो पे आप डॉक्टर को रिक्वेस्ट डाल देते हो, मेरे को ये सिम्टम आ रहा है, अगेन डॉक्टर वही चीज आपको रिपीट करता है, राइट? अच्छा, ये प्रॉब्लम हो रही है क्या? वो रिपीट रिपीट करने का उसका ये होता है कि वो आपसे एक बार एक्चुअली में कंफर्मेशन चाह रहा है और कुछ इंफॉर्मेशन और रिवील करवाना चाह रहा है, कुछ और क्लूज उसे मिले। तो सबसे पहले आप करते हो कॉम्प्रिहेंड करते हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। नेक्स्ट जो है, आप को एक बार लगता है कि हाँ यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सो 90% प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सॉल्व कर चुका होता है। यहाँ पे होती है डिस्कवरी प्रॉब्लम, जैसे कि बंदा बोल रहा है कि यार मेरे को व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनाते, ग्रुप बनाने का फीचर होना चाहिए। तो अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज कि प्रोडक्ट डिस्कवरी की प्रॉब्लम होती है, राइट? So in fact, the smartest product managers are the people who actually don't execute things much. वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार ऐसा तो नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है या डिस्कवरी में प्रॉब्लम है, राइट? ऐसा तो नहीं कि मैंने ये फीचर दे दिया था लेकिन ये मिल नहीं पा रहा है उस यूजर को, राइट? So that is one of the things that you kind of go about validating on the feedback, right? And then you also start doing some market sizing and segmentation कि यार कौन से ऐसे लोग हैं जो ये अगर मैं फीचर ऐसा बनाता हूं तो कितने लोगों को इस चीज की जरूरत है, राइट? एक तो है जरूरत है, पर एक जन के लिए तो बनाना नहीं है। अब सबके लिए अगर बनाना है तो फिर कितने लोग हैं जो इसको यूज करेंगे, राइट? लाइक अभी आप कोविड में देखो, राइट, तो वैक्सीन बनानी है तो सबसे पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? कितनी डोज बनानी है, राइट? कितनी डोजेज एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी हमको, फिर इनको एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी, राइट? सो ऑल दो सेगमेंट्स आर क्रिएटेड। जैसे अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रही है, फिर अब आ रही है कि यार एक बार डॉक्टरों को लग जाएगी, फिर ओल्ड एज लोग को लगा देंगे, फिर ओल्ड एज लोगों को लग जाएगी तो फिर नॉर्मल लोगों पे तब आएंगे। Then fourth piece is you actually go about prioritizing the feature or not, right? कि यार अभी अपने पास 10 काम है, राइट? आप जैसे पीएम हो ऐसे 10 और पीएम होंगे व्हाट्सएप पे, राइट? 20 टास्क हो गए, 20 में से कौन से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है? मे बी व्हाट्सएप की प्रायोरिटी अभी ये है कि हमें सबसे ज्यादा फेसबुक के लिए डेटा जनरेट करके देना है, कॉन्फिडेंशियल लोगों का डेटा, जिससे कि जो है फेसबुक खूब सारी एड्स दिखा सके। एटलीस्ट न्यूज में तो ऐसे ही आ रहा है, व्हाट्सएप को बहुत बुरा प्रोजेक्ट कर दिया गया कि ये डेटा माइन है फेसबुक की। तो उसके लिए क्या ये फीचर यूजफुल है कि नहीं और कितना यूजफुल है? तो यू एक्चुअली मेक अ कट थ्रू प्रायोरिटाइजेशन, और एक बार कट हो जाता है फीचर, देन यू गो अबाउट डिजाइनिंग समथिंग कॉल्ड अ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक। यार अब चलो ये है कि
ये है, ये फीचर को हमें रखना चाहिए, हमारे विजन से भी अलाइन होता है, देन यू गो अबाउट कि गोल्स बेसिकली हमारा विजन क्या है, विजन से कितना अलाइन हो रहा है, देन यू गो अबाउट मेकिंग अ फीचर फ्लो कि यार ये फ्लो एक्चुअली में काम कैसे करेगा, और उसके बाद आप वायर फ्रेम्स बनाते हो और फिर आप ट्रैक करते हो कि कितना सक्सेसफुल है कि नहीं। तो हम अभी ये फोर्थ पॉइंट को कवर कर रहे हैं, ए का फोर्थ पॉइंट को। तभी मैंने आपको बोला ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है आपकी आर्सनल में, राइट, बिकॉज यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, इसके पहले सब ज्ञान होता है, यहां पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। बट एक्चुअली में जब ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है तब आप जो है इस चीज को यूज करोगे तो मेक सेंस नहीं करता, राइट। अभी मेरे को अगर घर पे मेरे को वायरिंग करनी है, राइट, या मेरे को घर पे सिंपली खीला ठोकना है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा ना कि मैं बीम पे तो खीला नहीं ठोक रहा हूँ ना, वरना तो मैं दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रिल भी ले आऊंगा तो भी मैं बीम पे अगर करूंगा तो, बीम मतलब जो लोहे की वो लगी हुई है, राइट, जिसपे आपका घर के पिलर सेट है, उस पे तो आप छेद नहीं कर सकते ना उस पॉइंट पे। So that's why implementing wireframe right at the right point of time is important for you. Any questions we have here, guys? Guys, again, if you have any Hmm, doubts, just let us know. no, Definitely, I had one doubt. For Uh-huh. prioritization, would you suggest few frameworks or methods for prioritization of features, etc.? So essentially what happens is, right, prioritization के लिए देखो, one of the most जो अभी market में नया चल रहा है, that is RICE, right? RICE is full form of reach, right, impact, right, and then you kind of see what is the kind of uh, confidence you have, and then you go for estimation. बेसिकली है क्या ये, है तो ऐसे फुल फॉर्म में देखे तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज ऐसे दिख रही है। बेसिकली आप ये पता लगाना चाह रहे हो जो कि मैंने ऊपर बोला, कितने लोग इस फीचर को यूज करेंगे, अगर यूज करेंगे तो कितना ज्यादा यूज करेंगे, हम कितने कॉन्फिडेंट है कि वो यूज इसको करेंगे, और इसको इम्प्लीमेंट करने में मेहनत कितनी लगेगी। सही है ना, आप कोई भी चीज बनाते हो ऐसी तो सोचते हो, कितने लोगों Right, के लिए बनाऊंगा और उससे मेरे को कितना फायदा होगा, और मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ कि इतना ऐसा हो जाएगा, right, और right. ऐसा कुछ करने के लिए कितनी मेहनत लगेगी, राइट। सो इट्स कॉल्ड राइस, राइट। so but this is one of the मतलब अभी rice wheat right all those I don't know maybe in future it comes like rice की जगह wheat आ गया, right, but this is all very Right. kind of logical. Some companies so we at IND use this RICE, राइट, हमारा ज्यादा तर यूजेज ऐसे ही होता, तो सो वी वुड गिव कि यार देखो ये जो है हमारे आधे यूजर्स को जाएगा तो इसको 5 देते हैं, इसका इम्पैक्ट ये होगा तो इसको 3 देते हैं नंबर, फिर Hmm. कॉन्फिडेंस हमारा काफी हाई है तो 5 देते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया और एस्टिमेट डेवलपर में इंजीनियरिंग मैनेजर से पूछ लिया यार ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, वो स्प्रिंट कितनी डिफिकल्टी है, वो एक होता है टर्म स्प्रिंट स्प्रिंट में स्टोरी पॉइंट्स होते हैं, स्प्रिंट के अंदर Hmm. जो स्टोरीज होते हाँ, हैं स्टोरी पॉइंट होते हैं, तो वो स्टोरी पॉइंट बता देगा कि यार ये देखो ये तुम्हारी जीरा की टिकट लग तो 1 लाइन की रही है पर इसकी स्टोरी पॉइंट 4 है, hmm. तो आपको तब समझ आ जाएगा कि यार अच्छा इसमें एस्टिमेट बहुत ज्यादा है। वैसे बहुत कम ईएम्स बोलते हैं कभी कि यार इसकी स्टोरी पॉइंट 4 है मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई इसको उठाओगे तो महीने भर का काम। Got it. तो गोइंग बाय स्टैंडर्ड इंडियन लिंगो, राइट, जितना अभी तक some मेरे को like experience था. हाँ एक्सपीरियंस जितना भी देखा है तो बेसिकली 4 स्टोरी पॉइंट्स आपको वो समझ आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट द प्रायोरिटाइजेशन दैट यू काइंड ऑफ। Got it. Got it. So any other questions that we have? Let's proceed. Guys, again, it's a kind of an interactive session, guys, और वाई फ्रेमिंग और ये सब चीज़ें तो बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू फील दैट, इफ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, प्लीज आस्क, बिकॉज that's going to be help us in terms of explaining you in a very better way. हाँ एनी, और ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा आप अगर मेरे को लगेगा मतलब आप क्वेश्चन बिंदास पूछ सकते हो,
वो Correct. उस पे कवर होगा नहीं होगा, राइट, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी और ऋतिक, राइट, कि मेरे हाँ. को इस पे और हेल्प कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चन पूछो, राइट, एकदम चिल होके। एक मेरा और एक ये था वायर फ्रेमिंग के रिलेटेड ही, दैट अगेन लाइक वायर फ्रेमिंग कैन बी बिल्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर आल्सो. You can use Figma or anything to simply just to make a wireframe design to get to the designer. अभी मेरा ये doubt है that if the flow, for example, your wireframe, since you are obviously not a designer, your wireframe wouldn't be really perfect, right? At the end of the day, मतलब it's sometimes difficult for you to state that अगर 10 फीचर हुआ और मेरे को यही फ्रेम में एक ही स्क्रीन में वो 10 फीचर कैसे ना कैसे अच्छे वे में बताना है. So then how would you go about doing that? Like again, would you directly go to the designer to ask him that okay, this is the issue I'm facing, तो wireframe में नहीं बना है, or is it something you have to only take care of? See, there are so here it comes very जो आपने क्वेश्चन पूछा है, राइट, वो काफी कुछ काफी कुछ पीएम के ऊपर, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पीएम की होती है कि एग्जीक्यूशन कैसे होना है, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ मिस किया वायर फ्रेम पे, राइट, नाउ इट्स माय एबिलिटी टू काइंड ऑफ कन्विंस द डिजाइनर, राइट. अगर डिजाइनर बोलता है कि मेरे को वायर फ्रेम ही चाहिए है, राइट, टू एक्सप्लेन इवन दैट सिंपल थिंग, आई वुड गिव हिम अ वायर फ्रेम, Got राइट. it. नाउ what really, अगर आपको सच में प्रोडक्ट में अगर अच्छा करना है, तो आपको एक सिंपल चीज करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा काम आपसे खुद आता हो, राइट. So making wireframes as perfect as possible is something why people ask to use tools, right. ये तो आप पेपर पेन पे बना सकते हो, एग्रीड, राइट. बट वो सेम चीज है ना, आप स्कूल में 4th क्लास तक पेंसिल यूज करते थे, 5th से पेन, And then राइट. right. क्या डिफरेंस है, आप पेंसिल से लिखते थे, फिर वो मिटा भी सकते थे, राइट. पेन से लिखना चालू किया, मिटाना पॉसिबल नहीं है, तो अब आप सोच के लिखोगे, हाँ, राइट. right. तो सेम चीज इधर पे होती है. जनरली इट इज सजेस्टेड कि आप पहले पेंसिल पेन पे बनाओ, फिर And then उसके go for बाद the आप tool and finally वो and then share that. Right. या So क्योंकि उसमें आप मेकर चेकर कर दोगे, एक्चुअली में यू मेकर चेकर, आप ही मेकर होगे और आप ही चेकर होगे. you're right. So that is actually a really important part because वो UX ही main होगा which would actually go out to the designer और फिर वो उसके हिसाब से ही बनाने वाला है और उसके basis पे ही आपका पूरा product बनने वाला है. Exactly. And so I'll also, meanwhile I'll cover something right. So meanwhile meanwhile आपने एक बहुत अच्छा point बताया. I'll also tell you some tips and tricks so that you if you are short on budget or you are short on time, you don't need designer altogether. I'll tell you basically एकदम ही बिल्कुल रियली लगेगा कि कैसे है, राइट. लाइक पेटीएम के पेज पे अपने को हैप्पी न्यू ईयर लिखना है, राइट. इट्स अ ट्रिक आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम कॉलेज टाइम्स, आपने भी यूज करी होगी, बट आई जस्ट गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ दैट ट्रिक, राइट. यू कैन यूज इट अगेन, ताकि वो फिर बाद में ये प्रॉब्लम ही ना आए आपको डिजाइनर बोले मेरे पास टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं ही बना देता हूँ. अरे really good. Thank you. So उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि डेवलपर के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं. डेवलपर आपसे पता है क्या पूछेगा, यार ये वायर फ्रेम बताया, इसमें फॉन्ट का मेरे को साइज बताओगे कितना रखना है. Explain ये किया एक्चुअली में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है भाई. Right. तुम एक्चुअली में इंटरव्यू में अगर ये बता दोगे ना, वायर फ्रेम बनाने में चैलेंज में ये क्या आता है कि फॉन्ट साइज मेरे को नहीं पता है, उसको समझ आ जाएगा कि तुमने वायर फ्रेमिंग कर रखी है. Font यार ये कौन सा फॉन्ट यूज हो रहा है मेरे को, या ये बता दे इसकी पोजीशन क्या है, कितने साइज की पीएनजी यूज. left right margin पूरा वो बहुत एग्जैक्टली. वो देखो रियल वर्ल्ड में सवाल यही होते हैं, वो सवाल नहीं होते कि अरे यार ये, क्योंकि हम स्पेसशिप नहीं बना रहे हैं, राइट. अनफॉर्चुनेटली हम आज भी अर्थ पे ही हैं, राइट. शायद स्पेस एक्स में अलग होता हो, राइट, बट एज फार एज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी गो, राइट, प्रॉब्लम्स ऐसी ही होती हैं. यार ये लासो टूल जो तुमने सजेस्ट किया है, इसमें यार मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, एरिया कितना कवर करूँ, या ये तुमने मेरे को जो डिजाइन बना के दिए, यार ये आईफोन का नया वर्जन आया है, इसमें ये डिजाइन ऊपर से कट जाती है. right. हाँ, और आई टेल यू दी मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, ये हमेशा काम करता है. आप कोई भी प्रोडक्ट मेरे को बता दो जो कि अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें स्लाइडर हो.
स्लाइडर कभी काम ही नहीं करते, मतलब इनहेरेंटली वो नहीं काम करते। रीजन फॉर दैट इज कि स्लाइडर बनाने के लिए आपको स्केल नहीं पता होता है। 0 से 100 करना है तो 100 का स्प्लिट बनाना है कि 200 पिक्सल्स का स्प्लिट बनाना है, कैसे करना है, वो हर फोन में अलग होता है। या तो आप इतना बढ़िया एल्गोरिथम लिखोगे कि हर फोन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। Correct. Got it. Yeah, so that's one of the things. Any other questions we have? Exactly. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपके इंटरव्यू में जीवन में कभी भी पूछे वायर फ्रेम कब यूज करना है कि नहीं आपको पता हो, क्योंकि बहुत बार होगा कि वो इंटरव्यूअर आपसे चाहेगा ही नहीं वायर फ्रेम, और बहुत बार होगा वो आपसे एग्जैक्टली वायर फ्रेम मांग रहा होगा पर वो आपसे डायरेक्टली बोलेगा ही नहीं। बट वायर फ्रेम आर लो लेवल डिजाइन राइट, तो उसमें फॉन्ट्स एंड मार्जिन पैडिंग ये सब एक्चुअली आना नहीं चाहिए ना, वो जो प्रॉपर डिजाइनिंग होगा like that should contain those things, right? You are actually right. So wireframing in general is used for low fidelity designs, right? So, Correct. so there are two types of designs: low fidelity designs and high fidelity designs, right? But Correct. why those questions are asked? Because आप PM होते हो, right? So generally developer कभी designer से directly बात नहीं करता है, right? आप होते हो बीच में, right? तो आपको डिजाइनर का भी पता होना है और आपको वो भी पता होना है, राइट? और बहुत टाइम पे वो डिजाइनर आपको अवेलेबल ही नहीं होगा। दैट्स व्हाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे का एमबीए आज तक नहीं बना, क्योंकि वो एक्चुअली में स्किल ऐसा है ना कि मतलब अनलेस एंड अनटिल आपने देखा हो किसी को प्रोडक्ट मैनेजमेंट करते हुए, आप कैसे कर लोगे? क्योंकि आपको Correct. हाँ. डिजाइनर का पता होना चाहिए ना यार, हाँ डिजाइनर का वो एक्चुअली में ये वाला फॉन्ट यूज करता है जनरली। यू विल हैव टू आस्क द डेवलपर समटाइम्स, यार तूने वो जो दूसरी वाली बटन बनाई थी उसका डिजाइन मेरे को बता सकता है, उसका तू मेरे को वो बता सकता है फॉन्ट? एक्चुअली में हम वही फॉन्ट यूज कर लेंगे, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट? Those kind of, this is all to accelerate things, right? There is a proper way of going कि आप एक जीरा पे स्टोरी बनाओगे और वो करेगा, उस केस में आपका फीचर इंप्लीमेंट होने में 4 हफ्ते लग जाएंगे, राइट? आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू इट इन 4 days, बिकॉज आप जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करोगे उतना बढ़िया आपका प्रोडक्ट होगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए जरूरी है प्रोडक्ट होना, प्रोडक्ट परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, पर प्रोडक्ट होना जरूरी है। बट अगर लाइक यूजर एक्सपीरियंस भी हिंडर हो सकता है ना अगर हम लोग रैपिडली सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करते जाएंगे तो। हाँ, so that's why we do something called A/B testing, right? करेक्ट. जरूरी नहीं है कि मैं एक 500 मिलियन यूजर्स को ही एक दिन में पकड़ा दूंगा, पर 5 को पकड़ाने लायक तो प्रोडक्ट हो। गॉट इट. So that's how you kind of proceed there. Abhi, any other questions you guys have here, right? Because post that, right, we'll start with hands-on, right? And hands-on, I'll need kind of 40 minutes or something. So the main part is when wireframe adds value or when you have to do it after the above 5 points are met, and then when you're actually going to make the feature, right? Yeah, exactly. ये वायर फ्रेम्स जो है वो तभी काम आते हैं जब आपका इतना चीजें सॉल्व हो गई हो, राइट? आप देखो ये सब तो आपको वैसे ही करना है, राइट? आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए किसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, राइट? मेरे को रोल्स रॉयस का नया मॉडल बनाना है, पर मेरे को इसको बनाना है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में लोग जो रहते हैं उनके लिए, राइट? आई वुड गो बाय अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, राइट? पहला क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होगा, यार क्यों बनानी है अपने रोल्स रॉयस, राइट? तो आप देखो ना, आप जब दोस्त से भी बात करते हो, आप ये सारी चीजें जब भी आप नया आइडिया डिस्कस करते हो, एक्चुअली में आप ऊपर के पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होते हो और फिर बाद में बोलते हैं अच्छा यार तू डिजाइन बना के देगा मेरे को, या मैं भी डिजाइन बना के देता हूँ, तू इस पे काम कर, तू एपीआई बनाना चालू कर, मैं इस पे करता हूँ, राइट? सो ये एग्जीक्यूशन का, ये टूल एग्जीक्यूशन के काम का है। ऊपर जो है टूल्स यूज होते हैं वो अलग टाइप के टूल्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वैलिडेटिंग द फीडबैक के लिए हम यूज करते हैं एम्पैथी मैप्स, राइट? देयर इज अनदर फ्रेमवर्क वी यूज व्हिच इज कॉल्ड जॉब्स टू बी डन फ्रेमवर्क। मार्केट साइजिंग एंड सेगमेंटेशन आपको करना है तो अगेन यू go by doing some kind of guesstimates, right? You would also do some kind of cohort analysis on your data. Prioritization के लिए you will use a tool called RICE, right? फिर उसके बाद जो है अब एग्जीक्यूशन के लिए जो ग्रैंड
ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स है उसको हम पीआरडी बोलते हैं, और उस स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर एक टूल है वायर फ्रेम। मतलब ये रिक्वायरमेंट पास करते टाइम, तो रिक्वायरमेंट क्लियर होने पे ही तो रिक्वायरमेंट वर्ड ही हुआ है, अभी पता है कि क्या रिक्वायर्ड है तब तो रिक्वायरमेंट है ना। तो रिक्वायर्ड तो पता होना ही चाहिए कि क्या चाहिए, तो क्या चाहिए तक आप जब फिगर आउट कर लोगे तब आप वायर फ्रेम बनाओगे। After that only execution होगा, right? हाँ हाँ, आफ्टर दैट ओनली एग्जीक्यूशन होगा। और फिर ये प्रोसेस आइटरेटिव होती है, ऐसा नहीं है कि ये वाटरफॉल चलती है। आपको कई बार वायर फ्रेम से ऐसा हो सकता है यहाँ समझ में आ जाए अरे यार ये साइजिंग की प्रॉब्लम, ये हो सकता है, लेकिन वो फॉल हमेशा ऐसे ही करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कभी कि आप यहाँ से नीचे चले आओगे, यहाँ से उल्टा बैकवर्ड फ्लो करने लगोगे, राइट। आप अगर बैकवर्ड, आप सर्कुलर फ्लो ही करोगे। आप अगर फ्लो करें बैकवर्ड तो आप फिर नीचे यहाँ पे आओगे। Got it. मतलब साइडवेज या ऐसा कुछ वो नहीं होता। क्लियर है? Yes. So if by the way any questions you guys have, right, I mean more than happy to kind of answer you in between as well। अगर 5 मिनट बाद भी आता है तो बता सकते हो, राइट। सो अभी जो है, अब क्योंकि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिनिमाइज हो गई थी, राइट, सो अब हम एक्चुअली में ये वायर फ्रेम बनाने से पहले, देखो मैंने कुछ लिखा था मेकिंग फीचर फ्लो। तो ये फीचर फ्लो होता क्या है, राइट। फीचर फ्लो होता कुछ नहीं है। फीचर फ्लो जो है, जैसे हम आप में से बाय द वे कितने लोगों ने ऐसा है जिन्होंने कभी लाइफ में कोडिंग करी है या करने की कोशिश करी है? मैंने किया था। अच्छा, I'm और computer science student. I think Prem is also from computer science. Yes, sir, I done coding. Ali and Yeah, Prem, right? I've also we done took coding. yes, Yeah. ओके। और आप में से कौन है जिन्होंने कभी कोडिंग नहीं पढ़ी? Me. ओके, ऋतिक, राइट। तो बाय द वे ये जो फीचर फ्लो होता है ये काफी लोग यूज करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन लोग ज्यादा फेमिलियर होंगे इन फ्लो से। बट एनीवन हु हैज स्टडीड 5th क्लास, राइट, is a person who is eligible, मतलब ये आर यू स्मार्टर देन अ 5th ग्रेडर वाला क्वेश्चन, राइट। बहुत सिंपल है, राइट। हम सड़क पे जब चलते हैं तो एग्जैक्टली यही चीज करते हैं। तो फ्लो बेसिकली ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन का ये देख रहे होते हो कि क्या क्या पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं, राइट। और जनरली उसके लिए नोडल पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये देख रहे हो आप, अगर मैं, हाँ, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, अगेन वी गो बैक टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि इट वुड बी ग्रेट इफ वी कुड शेड्यूल इवेंट्स, राइट, ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। तो हम देखेंगे कि यार चलो, पहले तो ये बंदे ने फोन नंबर से अपना साइन इन किया, राइट, व्हाट्सएप के ऐप पे। अब वो साइन इन करेगा तो सबसे पहले वो देखेगा कि यार व्हाट्सएप क्या चेक करेगा, अंदर अकाउंट है कि नहीं है। भाई अगर अकाउंट है उसका तो उसका प्रीवियस डेटा रिस्टोर कर दो, अगर नहीं है, राइट, तो फिर क्या करना है, एंड सो ऑन सो फॉर। मतलब ऑफिस ऑफिस आप में से काफी लोगों ने शो देखा होगा, राइट। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, नहीं ऐसा है तो फिर दो रास्ते होते हैं, Right. फिर ऐसे तो हाँ. just like that, right? तो फिर Correct. दो तरीके होते हैं। So that's how it goes, and it's kind of it's very simplistic there। तो ये मैंने फीचर फ्लो एक बनाया हुआ है। ऑब्वियसली वन ऑफ द असाइनमेंट्स व्हिच आई विल गिव यू टू यू गाइस वुड बी टू अराउंड दिस ओनली। इस फीचर फ्लो में इम्प्रूव क्या हो सकता है, राइट। सो अगर बंदा आता है तो उसने फोन नंबर अपना डाला, एग्जिस्ट, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अकाउंट तो पुराना डेटा दिखा दो। जैसे नैवेद्य का अकाउंट है तो उसने फिर से व्हाट्सएप पे अगर नया चाहे कितना भी नया मोबाइल लिया है, मोबाइल नंबर से रिस्टोर हो जाएगा उसका पुराना डेटा। नहीं है तो उसको बेसिकली हम होम स्क्रीन पे कुछ इनपुट्स देंगे जहां पे वो डालेगा, और फिर उसके बाद उसके लिए Nivide, can you just please zoom it? I think थोड़ा सा इसको अगर फुल स्क्रीन क्या, कर सकते तो। श्योर 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 यानी श्योर, काफी छोटा लग दिख रहा है। ओके, हाँ जी। एक आपने, एक हाँ सेकंड मेरे हाँ कुछ जी और हाँ। बताओ। मे बी यू कैन टेक इट एज अ फुल स्क्रीन ना, तो फुल हाँ स्क्रीन हाँ, पे मैं देख वही कर रहा हूँ, सकते। वही हाँ कर फुल स्क्रीन पे रहा देख हूँ। सकते। एक सेकंड, प्रेजेंट।
guys, please make sure कि अपने doubts और सब कुछ पूछ लो, because Nivide is a gem, right? And he's gonna be sharing a lot of knowledge. At the same time, जितना ज़्यादा exposure आप communicate करोगे, उतना ज़्यादा exposure आपको और मिलेगा. Because as you know, 50% of the product management comprises of communication skill set. So please make sure कि communicate well. Yeah. And just to give more incentive, guys, अगर मेरे को सही में अच्छा लगता है, right? So and then obviously, right? So I can also help you out, right? Connecting, right? बहुत बार लोग पूछते हैं आपसे, यार कोई है ऐसा बंदा, और आपके दिमाग में किसी बंदे की छाप छूट जाती है, Correct, right? correct, और correct. वो छाप जनरली कैसे छूटती है? So since I have 1 minute to spare on this, and it's an important lesson I learned. So जनरली जो लोग सवाल पूछते हैं ना, वो लोग भगवान के सबसे क्लोज होते हैं. रीजन फॉर दैट इज वो हिम्मत करते हैं कुछ पूछने की, राइट? और जो सिर्फ मत्था टेक के लौट आते हैं ना बिना उनसे सवाल पूछे, राइट, उनको वो कैसे याद रखेंगे? जब इंसान नहीं याद रखेगा तो भगवान कैसे याद रखेगा? Wow, wow, मस्त है, wow. बहुत अच्छा होगा. Great, 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 great. वो अगर सब कुछ सही है तो आई शुड प्रोसीड कि बेसिकली अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. अगर नहीं करता है तो जो है हम यहाँ पे उसको होम स्क्रीन पे जो रिडायरेक्ट करते हैं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करवाते हैं, राइट? और फिर हम चेक करते हैं कि यार ये यूजर ग्रुप को बिलोंग करता है कि नहीं करता है. अगर वो नहीं करता है तो पहले हम उसको वेट करेंगे जब तक वो ग्रुप क्रिएट नहीं करता, और अगर वो है ग्रुप में तब हम उसे फीचर देंगे कि किस बंदे के साथ उसे किस टाइम पे कौन सी जगह के लिए अपनी मीटिंग सेट करनी है. कोई मेरे को बता सकता है इसमें मैंने मिस क्या किया? मैंने एक लाइन मिस करी है. ये ऑब्वियसली असाइनमेंट का पार्ट नहीं है, बट ये अभी लाइव एक्सरसाइज है, इसमें एक लाइन मिस करी है मैंने. लाइक आपने टाइम और वेन्यू और इनवाइट भेजा था, लेकिन किस लाइक इज इट जूम इनवाइट और व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं, ये इनवाइट? व्हाट्सएप का ही सिंपल व्हाट्सएप का ही उसको चले आएगा, योर मीटिंग यू हैव बीन सेंट एन इनवाइट एंड मीटिंग हैज बीन सेट. एंड आई हैव Accept वन or मोर reject the invite or something. एक्सेप्ट और रिजेक्ट ये जो आप delete भी कर कंटेंट रहे कंटेंट मिस हो गया. आई थिंक व्हाट व्हाई यू वांट टू कीप द मीटिंग, उसको create तो group. कुछ तो कुछ Does the name exist? Common name भी हो सकता है. That can be one of the ways. okay, so one of those is comment, एंड but उसके पहले भी कुछ है. मे बी. अच्छा, मैं तो टाइम तो है इसमें. टाइम डेट डेट नहीं है. आई डोंट टाइम नो. में डे भी तो आ जाता है ब्रॉस. टाइम में तो हाँ, डे टाइम भी पे आ आता जाता है. वो तो हाँ, I वो सब think कुछ it's आ जाता है. considered. हाँ. हाँ, इट्स कंसीडर्ड इन सेट वेन्यू, सेट कॉन्टैक्ट. और मे बी अगेन. Location. नहीं, नहीं, अगेन वेन्यू हो वेन्यू तो इज गया. वेन्यू लोकेशन. तो हो तो गया. अच्छा, मैं देखा नहीं, sorry. बिल्कुल स्टार्ट से आप जाओ, स्टार्ट से एक बार फ्लो Okay. देखो. एंड I mean, सेलेक्ट कॉन्टैक्ट. maybe the restore previous data, returning users is not connected here. awesome. Is this who is this? ऐश्वर्या. Okay. You know what? I was expecting this answer from you, and I'm not lying in least bit. The reason for that is you're carrying the least baggage. राइट? आप जितने फ्रेश होते हो ना, आप जो है बिल्कुल बेसिक चीज को देखते हो कि 1 के बाद 2 आ रहा है कि नहीं. मुझे एक्सप्लेन करना निवेदी, कैसे, क्या क्या बोला है? इन्होंने ये बोला कि देखो ये रिस्टोर प्रीवियस डेटा तो कर दिया, आपने क्या बोला? अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट जो है, ठीक हाँ. है? अगर हाँ है, अकाउंट एग्जिस्ट भी करता है तो भी, अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो भी, तो हमें यही क्वेश्चन पूछना होगा ना, डज यूजर बिलोंग टू द ग्रुप और नॉट? ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट Okay, इट. so you mean to say that वो flow basically टूट गया था, उसके बाद वो connecting वाया नहीं था. कनेक्टिंग. हाँ, 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 अच्छा, हाँ, okay. हाँ. हाँ. I think मैंने क्वेश्चन आधा सुना था, right? हाँ, सो और मुझे लगा कि लास्ट वाला पूछ रहे हो मुझसे. करेक्ट, करेक्ट. परफेक्ट, परफेक्ट. awesome. So by the way, the biggest lesson to learn here is कि always as a PM, right, always listen. अगर आप PM हो ना, right, तो आपके ऑफिस में जो चाय वाला भी है ना, वो एक्चुअली में आपके लिए सबसे सही पॉइंट पे आपको एक्चुअली में फेल सकता है. और बहुत बार होता है. आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ आशीष एक्चुअली कि एक इंटर्न आया था एंड ही एक्चुअली पोस्टेड अ प्रॉब्लम,
and he was like, this guy actually opened my eyes. Hmm. ये True. होता है बहुत बार होएगा. True. True. So that's beautiful about it. So restore previous data से एक लिंक होता है, राइट? तो हमें इधर पे भी, सो एनी फ्लो हैज टू बी कंप्लीट. अब हम इसे वायर फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे बाल्समिक में. एनी क्वेश्चंस गाइस? चाय वाले का कनेक्शन समझ नहीं आया मुझे. सो बेसिकली देखो, आप जो है कोई भी ऐप बना रहे हो, आपने जोमेटो का ऐप बनाया और उसमें आपने बेसिकली ये आप नया फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि रोज जो है सब्जी भाजी 5 बजे पहुंचा दी जाए लोगों को, ठीक है, जो कि मिल्क बास्केट जैसे सब्सक्रिप्शन देता है, राइट? नाउ मे बी द पर्सन हु यू शुड टेस्ट दिस थिंग विद इज द पर्सन हु डजंट हैव द प्रायर नॉलेज राइट नाउ, जो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट, जो बहुत ज्यादा टेक ओरिएंटेड पर्सन नहीं है. अगर वो भी आपका फ्लो समझ जाएगा तो बाकी तो समझ ही जाएंगे ना. Yes, yes. So that's how it is, right? I mean, uh, 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 so that's one of the acid tests you do always. कि यार, is it understood by people who are not domain expert? Like for example, Aishwarya is right straight from the college, right? She is not carrying any kind of corporate baggage कि यार industry में ऐसा कुछ होता है, market में ऐसा कुछ होता है, right? It was a basic question कि यार यहाँ पे अगर previous data है तो क्या यार वो भी तो user का हमें देखना पड़ेगा ना, group बना है कि नहीं बना, क्योंकि उसका भी तो group हो सकता है. So that's why I kind of wanted to kind of highlight that, give you an example for that. Shall we kind of proceed? If that answers. Yes. Cool. One small doubt. Yep. Apito, does user belong to group? You asked, right? Here can you select group also? But because in the problem statement I saw that you wanted to like send an invite for a group. If you want to send it to a person, then I think group is not required. You can save and you can send it personally, right? And why do you need to go to group and then select a contact? So that is right. So here what we are doing is actually scoping out the problem, right? हम देखो WhatsApp में मल्टीपल फ्लोज है जहां पे ये फीचर इंट्रोड्यूस हो सकता है, राइट? अब हम पहले ग्रुप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि एक्चुअली में उस बंदे ने सबसे पहले हमको बोला था कि यार मेरे को एक्चुअली में ग्रुप में सेट होने में वो होता है, राइट? सो द इनहेरेंट assumption I kind of took the liberty here, and you are right. मेरे को assumption में ये क्लियर करना था कि मैं सिर्फ ये ग्रुप के लिए बनाऊंगा अभी फिलहाल के लिए, एंड मे बी जब वर्जन 2 या वर्जन 3 है, then we can go about solving this problem for one-to-one users as well. Okay. So any more questions we have on flow? Because ये flow clear होगा तो wireframe तो 5 मिनट में आप लोग मतलब Balsamic में तो बहुत जल्दी expert बन जाओगे. I mean, I have one question actually. Hello. Yeah, in the flow, maybe the previous person was asking that, was saying that if you know the person, you'll directly contact them. But like in WhatsApp, you kind of make like meetings official and unofficial. Maybe if we give them an option for like if it is an official formal group or if it is an unofficial formal group, or if we can change the group into formal or informal, maybe that would help a lot, I guess, in the flow. आप मेरे को ये बोल रहे हो कि मेरे को एक टैग देना चाहिए हर ग्रुप के अगेंस्ट कि should I want to make it formal or not? Yeah, in formal group, maybe if we send like set a reminder, set a venue, or send an invite, that would make much more sense, I guess. Like because in informal, maybe we can just directly communicate with them. See, Aishwarya, right? The challenge with a product like WhatsApp is, right? WhatsApp जो है वो वर्क या पर्सनल लाइफ ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं है. WhatsApp जो है वो एक जेनरिक प्रोडक्ट है. जैसे कि आप बोल रहे हो, राइट, कि मेरे को वर्क का स्प्लिट बनाना है, राइट? सो द वे WhatsApp वुड एक्चुअली थिंक अबाउट इट, या आप एक अलग नंबर से लिंक कर लो ना जिसमें आप सारे अपने एंगेजमेंट्स कर सको, राइट? इट्स
व्हाट्सएप की मेन यूटिलिटी क्या है, मेन विजन स्टेटमेंट क्या है? वी वांट टू कनेक्ट एवरीवन, राइट? आप क्या बोलते हो? जस्ट व्हाट्सएप मी, जस्ट कम्युनिकेट विद मी, या जस्ट सेंड मी अ मैसेज की जगह आप क्या बोलते हो? जस्ट व्हाट्सएप मी, राइट? तो द प्राइमा फेसी विजन ऑफ द कंपनी इज दैट ना। अब उसमें जो है मेरी फॉर्मल या इनफॉर्मल, सो व्हाट्सएप विल नॉट डिस्टिंग्विश कि आपकी मम्मी का टास्क इंपॉर्टेंट है या आपके बॉस का टास्क इंपॉर्टेंट है। उनका प्रायोरिटाइजेशन सिर्फ टाइम बेसिस पे चलता है, जिसका सबसे पहले आया, राइट, उसका सबसे पहले दिखाओ। No, I was just saying that, we'll give the users the option. If it is formal, then we'll add more features like to set time or to set venue or to send them reminders. अच्छा अच्छा, आप यहाँ बोल रहे हो कि इनको प्लेन वनीला दे दो एंड देन यू कैन ऐड फ्लेवर्स मोर टू इट, राइट? इट्स अ Yeah. फॉर्मल। Maybe that's like WhatsApp business thing because it's already Yeah, working area. Yeah. I it But gives don't a the lot of know. features, like you can yes, send if notification once somebody drop a message to you, correct. like automatic notifications, all of those. No, not like that actually. The problem statement for us right now is that to have like a set of reminders or to set time or to set venue or something like that, to remind someone, like, okay, we have scheduled this thing. So, what I'm saying is that if we put something like formal and informal, and we'll give the user the option to change it to formal. If the user is willing to take the formal option, then we'll display them other set of features. I'm saying that like not everyone wants to use the So formal uh, option. again, if you can just go for maybe the business WhatsApp, maybe we can actually can use only for the business WhatsApp or maybe something else because Yeah, hmm, I guess Aishwarya, right? What you have actually discovered, right, is an extension of this feature, right? Maybe you can have something which actually opens up a new revenue line, just like WhatsApp business, right? As Ritik was saying, right? And key WhatsApp business may maybe we can introduce this feature as well, right? Like formal, maybe we can keep it as corporates and non-corporates, right? So, and maybe in the personal feature as well, right? Maybe WhatsApp plans to launch something, right? WhatsApp plus plus, right? Where you pay a monthly fees, जैसे YouTube Music आ गया है, right? आपको plain YouTube तो YouTube पे सुन सकते हो, पर YouTube Music में आप जो है स्क्रीन बंद करके भी सुन सकते हो। अगर आप जैसे Spotify है वैसा YouTube Music की तरह यूज कर सकते हो, right? So those things you can obviously add in your PRD, that these are the next level features. For the scope of this problem, we are keeping it very straightforward. यार हमें अभी फिलहाल इसको बहुत जेनेरिक तरीके से सॉल्व करना है, हमें ग्रुप्स के लिए सॉल्व करना Okay. है। if there is any kind of doubt, right, you can have, right, we can obviously speak right after this session, right? But kind of in the interest of kind of driving it on the main track, right, I because for me, right, it's very important for you guys to actually see how to go about using balsamic. Right. That is more important. So so देखो balsamic, right, it's this company, right, is the de facto standard, and it's for a very simple reason, इसका learning curve ही नहीं है, right? बहुत simplistic product है, बहुत easily समझना है। मेन चीज जो है balsamic की beauty है कि इसमें काम बहुत तेज होता है, राइट? बहुत सारे टूल्स हैं, राइट? आई हैव यूज्ड लाइक अ लॉट। इनफैक्ट ऋतिक को आज मैं एक नया टूल दिखा रहा था जिसको मेरे को किसी ने कल बताया, राइट? विच ऑल्सो अलाउज यू टू डू इट। इट्स अ गुड टूल, राइट, बट इट्स नॉट दैट फास्ट, राइट? अगर आप किसी से बोलोगे, राइट, कि कौन सा डी फैक्टो टूल है, तो वो बैल्समिक इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, अंडरस्टूड बाय एवरीवन। अगर आप रिज्यूमे में भी बैल्समिक बोलते हो तो सबको पता है मतलब क्या है। also people actually use Azure as a tool, right? But at the Yeah, same point of time, Balsamic का कोई replacement है ही नहीं. it's as Ritik rightly said, right? I mean, this is the standard tool. मतलब जैसे अभी Photoshop का Photoshop हम बोलते क्या है यार, फोटो को एडिट कर लो, फोटो को वो हम क्या बोलते हैं, फोटोशॉप कर लो, राइट? लाइक ऋतिक, if he asked me to build something, बोले यार इसके बाल्समिक दे दोगे क्या? Correct, exactly.
तो इट्स एज सिंपल एज दैट लिंगो. मतलब आप किसी भी डिजाइनर डेवलपर को बोलोगे ना कि यार मैं इसके बैल्समिक भेज देता हूँ, वो समझ जाएगा क्या देने वाले हो. अब फिर आप एक ज्योर का लिंक दे दो या फिग्मा का दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता. उसको समझ आ गया कि बैल्समिक दे दूंगा मतलब ये है कि मैं वायर फ्रेम पकड़ाने वाला हूँ तुमको, अभी तुम्हारे ऊपर एक नया टास्क आने वाला है, तुम्हारी स्प्रिंट में कुछ कुछ ऐड होने वाला है, तो छुट्टी डालनी है तो अभी डाल देते हैं. So I'll go about logging in. So by the way, right, this is a paid tool, right? But the beauty is 30-day का access मिलता है per email ID. So for learning, right, email ID बनाना free होता है. So आपको जितनी बार बनाना है, feel free to kind of make the IDs. मैंने तो लाइसेंस कभी नहीं लिया Balsamic का personally, कंपनी के लिए खरीदा था. And let's go about kind of logging into the application. एक छोटा सा डाउट है इधर. हम्म. सो आपने लाइक फ्यूचर फ्लो बना दिया ना, हाँ. जैसे स्टार्ट लाइक फोन खोल लिया था, व्हाट्सएप खोल लिया था, उसका एक ग्रुप में गया था, लाइक आई मीन अकाउंट होगा तो फिर होम स्क्रीन दिख जाएगा, फिर हम्म. ग्रुप है क्या देखेगा, ग्रुप होगा तो देन कॉन्टैक्ट, सेट टाइम, सेट मेन्यू, सेंड इनवाइट. ये हम्म. चार चीजों को लाइक हाउ यू आर थिंकिंग, लाइक एट द टाइम ऑफ फ्यूचर फ्लो डू यू थिंक हाउ यू वांटेड टू क्रिएट योर wireframe, otherwise when you go to wireframe you will think at how should it look like. So यार देखो, ये फ्लो जो है ना, फ्लो, और बहुत सही क्वेश्चन है एक्चुअली में. दिस इज वन ऑफ द ग्रेट क्वेश्चंस, राइट. द रीजन फॉर दैट इज ये साइक्लिक प्रोसेस है. पता है, आप फ्लो देख के वायर फ्रेम बनाओगे, वायर फ्रेम देख के फ्लो इंप्रूव करोगे. वो मैं एक्चुअली में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा हमें देखो, अभी ये वाली जो नॉलेज है इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लग रही है, राइट. Yes. वायर फ्रेमिंग में विजुअल थिंकिंग लग रही है, राइट. Yeah. Visual thinking is controlled by a different hemisphere of brain. Analytical thinking is controlled by left hemisphere of your brain. Yeah. Right, और right side से आपकी artistic thinking चलती है, right, which goes in balsamic. आपको दोनों का convergence मिलेगा दोनों को साथ में देखते हुए. Okay. मतलब साइंटिफिकली है. आप ये पढ़, मतलब मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ. सो योर ब्रेन हैज लेफ्ट Yeah. हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड कॉर्पस कोलोसम व्हिच लिंक्स दी बोथ. तो एक्चुअली में आप जब दोनों को देखोगे तो आपके जो सेंटर नोड है ब्रेन का, तब वहां पे जाएगा इंफॉर्मेशन. Okay. मतलब बहुत अगर बहुत साइंटिफिक हो गया है तो आई मीन इट्स वेरी सिंपल कि आपको नहीं दोनों समझ गए. सिक्के के दोनों पहलू देखने हैं. तो if we so balsamic में by the way मैंने अभी बस Gmail से साइन इन किया है, राइट. कुछ रॉकेट नहीं करा है. यहाँ पे आ जाता है सिंपल क्रिएट योर स्पेस. ये आपको स्क्रीन दिख रही है क्या लोग, आप सबको? नहीं 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 इस बात में सर उसने स्क्रीन फ्लो दिख रहा है. सॉरी. should I resume sharing? एक मिनट, resume share. Let me stop share and let me start. अगेन. Yeah. Guys, ऐसा कुछ हो फटाफट आप लोग बता दिया करो, स्क्रीन नहीं दिख रही. हाँ. So यार बैल्समिक पे है ना, सीधे मैंने बोला कि गूगल से लॉगिन कर दो, राइट. अब और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लैंड हुआ, क्रिएट योर स्पेस. अब यहाँ पे क्या करना है, राइट, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, एक ही बटन है. तो वही प्रेस करूंगा, नेम योर स्पेस, लेट्स कॉल इट Brightigo, right, and I just click on create my space and start my free trial. And then you see two options, right, create your project and upload projects, right. So for this purpose, right, so अगर आपने पहले से बनाया हुआ हो तो you can go about uploading a project, but right now we will start with create your project. So यहाँ पे अगर आप देखोगे, राइट, so again, right, this utility, right, is as I told you, right, बहुत simple learning curve है, सब कुछ visual है, right, but wireframing फिर भी one of आई थिंक नैवेद्य सर के यहाँ लाइट चली गई है. नैवेद्य सर कहाँ रहते हैं आप? नोएडा में रहते होंगे या फिर वहां पे रहते होंगे जहाँ पे अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है बॉर्डर के पास. फरीदाबाद. कहाँ पे? अयोध्या. फरीदाबाद.
फरीदाबाद। फरीदाबाद, हाँ ब्रो। ये कौन सी जगह है वो? अभी मेरे एक इंटर्न ने मुझे भेजा है अभी कि उसके यहाँ नेट नहीं आ रहा है कोई एक जगह। गाजीपुर। कितना मस्त सेशन जा रहा था। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है गाइस? बढ़िया, बड़ी सेशन तो बढ़िया जा रहा था ना। हाँ जी। हाँ यार। मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ, रुको उनको। Hello. Hey guys. Hello. Can you hear me? Yes. Yes, Yes. yes. तो यार सॉरी, लाइट पे आके चली गई थी एकदम से, which usually doesn't happen, but अभी सर आप बॉर्डर के पास में रहते हो क्या? कहाँ? बॉर्डर के पास में रह रहे हो क्या, गाजीपुर और ये सब जगह? नहीं नहीं, मैं सेक्टर 137 में रहता हूँ, सुपरटेक नोएडा सिटी करके। या गुड़गांव? नहीं नहीं, नोएडा। ओह वाओ। So I used to live in Gurgaon. I moved back to Noida. मतलब काफी लोग हंस सकते हैं, मतलब नहीं 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 दुर्गति। नहीं। तो बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। गाइस, नोएडा इतना बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे स्विगी वाले भी ऑर्डर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका बीच में से कि कोई छीन के ले जाता है ऑर्डर। ऐसा कई बार हुआ है सर आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे साथ कभी ऐसा भी नहीं हुआ है कि हमारे यहाँ कभी लाइट गई हो। हाँ, दैट्स, आई तो नो। आई ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम लाइक, मेरा मेरा एक वहाँ पे है नोएडा में, सेक्टर 48 में, डी ब्लॉक में। अच्छा। सो वी हैव स्मॉल प्लॉट। अच्छा। ओ, awesome. So, so just FYI, right? Yeah. So Noida में, as he rightly said, right? यहाँ पे छिना लिया जाता है, वो भी होता है। तो अभी सब कुछ होता है। हाँ, यहाँ के पीएम्स को ये भी सोचना पड़ता है कि हम कैसे, क्या, कौन सा बम लगा के भेजे ऑर्डर में कि दिक्कत होए तो क्या होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So guys, let's. I was kind of working with you guys, right? Walking you through कि क्या balsamic है, right? The meat of the session, right? So I'll quickly tell you about. By the way, my screen is very well visible to everyone, right? Say yes. If it's यस सर, not, यस यस Yes, सर। yes. Yes. so see, as I told you, right, my idea here is to uncover balsamic for you, right? We'll try to build the feature, right? But at the meantime, it's very important for you guys to start exploring this feature even more. सो पहली जो चीज होती है जब आप बैल्समिक पे जाते हो, राइट, विच इज दी थिंग, राइट, आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट, ये मेरे में वेब पेज ऐसे करके आ रहा है, राइट। मैंने क्या किया, यहाँ से बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करा। I just dragged and dropped the
main kind of web page icon, क्योंकि इसके अंदर ही मैं अपना जो है काम करूंगा, राइट. सो आप जो है इसको जब भी देखते हो, राइट, सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी होती है which is show project info. If you can see right side में मेरे आइकॉन है, तो यहाँ पे स्किन होती है. So there are two types of skins, wireframe and sketch. So generally आप लोग जब क्योंकि मेरे में शायद कुकी पहले से स्टोर होगी तो वो वायर फ्रेम पे डायरेक्टली कर रहा था, बट आपके लिए बैल्स में कुछ ऐसा अजीब सा खुलेगा, राइट, विच काइंड ऑफ गिव्स यू अ वेरी काइंड ऑफ स्क्रैपी लुक. सो फर्स्ट थिंग यू शुड एक्चुअली डू ऑलवेज इज कि यहाँ पे एक बुक वाला बटन है, क्लिक ऑन दी बुक एंड बुक ऑलवेज एनलाइटन्स यू, सो इट विल एनलाइटन यू टू चेंज इट टू वायर फ्रेम. सो आप देखो कितना ज्यादा रिफाइंड हो गया है. सी अर्लियर इट वाज लाइक दिस, राइट, बहुत ही स्केची दिख रहा था, एंड नाउ यू हैव दिस इज वेरी यूजफुल. इट्स जनरली समथिंग विच एवरीवन काइंड ऑफ आस्क कि यार मेरा जो है वो उतना रिफाइंड नहीं दिख रहा है. रीजन फॉर दैट इज कि स्किन आपको वायर फ्रेम चूज करनी है. सो नाउ वंस दैट इज डन यू आर ऑल सेट, राइट. नाउ हियर, राइट, जैसे कि आपका पावर पॉइंट में होता है, राइट, सिमिलरली हियर यू हैव different different kind of boards, right. हर board पे आप जैसे, so wire framing is very similar to how you make a PPT, right. आप screen by screen जाते हो और हर screen में basically किसी एक element पे focus करते हो, and you can always, यहाँ पे एक बड़ा सा plus sign बना है, right, which you can click to add a new kind of new wireframe window, right, and within that you can add all the elements. Now all the elements you have are available here, जैसे कि आप देख रहे हो, right, like I can drag and drop everything, right. Now the first element that I'll go about, and there's something called this search, right. This is a very useful search, right. I'll tell you why this search is so good. One uh, uh, यहाँ पे I'll go about, मेरे को जैसे फोन, पहले तो मुझे एक फोन का स्क्रीन चाहिए होगा, राइट. सो क्योंकि व्हाट्सएप है, राइट, सो लेट्स and most of the users are Android users, right. Let's choose an Android phone, a normal smartphone. So uh, and I can go about resizing this as big as I want, right, and within this we'll go about designing WhatsApp की screen. Now one of the things आपको जो बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखनी होगी, right, is a lot of time, right, you will require elements within WhatsApp, right. Elements बोले तो जैसे कि आपको WhatsApp के अंदर जब आप क्लिक करते हो, I guess आप सब एक बार WhatsApp खोलोगे अपने फोन के अंदर, खोला? हाँ. व्हाट्सएप की स्क्रीन आप देख रहे हो, व्हाट्सएप लिखा हुआ है, राइट में एक सर्च का आइकॉन है, और ये फिर 3 डॉट बने हुए हैं, हैमबर्गर डॉट्स कहते हैं इनको, राइट. तो ये, और चैट्स लिखा है, स्टेटस लिखा है, कॉल्स लिखा है, और एक कैमरा की भी आइकॉन बनी हुई है, राइट. सो वील स्टार्ट लुकिंग एट द स्क्रीन एंड स्टार्ट रेप्लिकेटिंग इट. सो जनरली स्टेप 1 आपको ये रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट का जो लैंडिंग पेज है वहां से स्टार्ट करोगे आप, बिकॉज सो इसको, इस स्क्रीन को ऐड करने का हमेशा फायदा ये होता है कि डेवलपर आपसे घूम के कभी ये नहीं पूछेगा ये कौन सी जीरा टिकट की बात कर रहे हो या कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहे हो. एवरीबॉडी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड्स फ्रॉम वेयर यू आर काइंड ऑफ स्टार्टिंग दिस. सो लेट्स so I am kind of looking at this kind of screen, and I'll go about adding a subtitle. So यहाँ पे मैंने search में type करा, right, because I wanted to add a subtitle. You can also drag and drop from here, right. So I'll just add a subtitle because उसका size जो है वो थोड़ा सा ठीक है, right, and I'll type WhatsApp here, right. So see guys, what I am doing right now is just looking at my phone and kind of replicating the screen. The reason for doing that for me is कि मेरे को डेवलपर को यहाँ से ही स्टार्ट करके बताना है कि देख अभी ऐसा दिखता है, इसके बाद अब देखिए कैमरा की आइकॉन है, राइट.
सो अब मैं यहाँ कैमरा लिखूंगा तो भी मुझे कैमरा मिल जाएगा, राइट? एंड आई कैन ऑल्सो सर्च ऑन आइकॉन. सो यहाँ पे अगर आप आइकॉन लिखते हो, राइट, तो यहाँ पे आप आइकॉन ऐसे बॉक्स आ जाता है और इसको क्लिक करके अंदर बहुत सारे आइकॉन्स आ जाते हैं. नाउ ब्यूटी इज, राइट, मैंने आपसे कहा था, राइट, यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर्स ने मेहनत करी है, राइट. आई टेल यू व्हाई. मेरे को मान लीजिए चैट के लिए एक आइकॉन चाहिए होता, तो मैं ना इस सर्च पे चैट टाइप कर दूंगा और देखो आप चैट के इतने सारे आइकॉन्स आ जाएंगे, राइट. नाउ सिमिलरली आई काइंड ऑफ नीड एन आइकॉन फॉर अ प्रोफाइल, राइट. तो मैं सिर्फ प्रोफाइल टाइप करूंगा और प्रोफाइल से लिंक जितने भी आइकॉन्स है वो आ जाएंगे. So they have kind of very beautifully kind of created a table internally कि कौन सी चीज किस चीज से linked है. जैसे कि मैं चार्ज अगर लिखूंगा, राइट, चार्ज तो नहीं आ रहा है, राइट, लाइक मैं बैटरी लिखूंगा, राइट, सो दे वुड एक्चुअली गिव मी काइंड ऑफ ऑप्शन. मैंने सिर्फ बैट लिखा था, राइट, सो दे विल गिव मी एन ऑप्शन ऑफ अ बाट टब एज वेल, राइट. सो सो इट्स काइंड ऑफ इट्स वेरी हेल्पफुल कि आपको जो भी आइकॉन की जरूरत पड़ती है वो मिल जाती है. जैसे कि मैं अगर कैश लिखूंगा ना, तो मेरे को आपको देखो कैश का आइकॉन मिल जाता है, राइट. आई डोंट नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द आइकॉन दैट आई नीड. तो ये बहुत ये सुपर यूजफुल फीचर है. बहुत स्मॉल चीज किसी ने सोची थी, पर ये आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत फास्ट कर देती है. अब आप देखो इतना बड़ा कैमरा का तो आइकॉन है नहीं व्हाट्सएप पे, राइट. सो व्हाट आई गो अबाउट इज, मैं हर एक एलिमेंट का जो है यहाँ आई पे क्लिक करूंगा तो मुझे उसके सारे वो मिल जाएंगे, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है. So I can then go about resizing this, right? Like S is there, M is there, right? So S is for small, extra small, and then medium. Right? So I can go about choosing the size of the icon, and then I can then I will add few elements fast here, right? Like for example, यहाँ पे charts है, right? And then we also have status here. And then we have calls here. और कुछ होता है क्या? यही तीन होते हैं, राइट? मतलब और इसके बाद I'll just underline chat because chat का बॉक्स जो है वो बेसिकली खुला हुआ है. Yeah, tell me, somebody was telling something. नहीं, आई वाज जस्ट एग्री ऑन योर पॉइंट कि इतना ही है सिर्फ. ओके, सो नाउ मेरे को ऊपर एक सर्च की आइकॉन देनी है, राइट. सो क्योंकि वो सर्च भी है ऊपर, सर्च को मैंने फटाफट स्मॉल सा किया, राइट, और मैंने एक सर्च को भी यहाँ रख दिया. And then I need hamburger bars, right? I typed ham, right, and I got these icons, right? These are the standard icons, right, which are used. Either with three dots, hai. I can also have those dots here, but right. Okay, let's keep dots, but I can keep the hamburger anywhere. So hamburger basically is used to kind of see a lot of categories. A lot of things are categorized within uh, hamburger, and developers generally use this word कि मैंने उसको hamburger में डाल दिया था. वो it's like mostly a full fledged menu के उसमें हो जाता है. हाँ. सो लॉट ऑफ थिंग्स, राइट गाइस, कुछ कुछ वर्ड्स हैं, राइट, जो कि आपको इंस्टेंटली डेवलपर, जब भी डिजाइन राउंड होता है ना, डेवलपर इंस्टेंटली बता सकता है कि आपने कभी डिजाइनर इंस्टेंटली बता देगा इसने कि आपने डिजाइनर के साथ काम किया है कि नहीं किया है, राइट. वन ऑफ द वेज विच अ लॉट ऑफ पीपल काइंड ऑफ यूजेस कि वो स्टैंडर्ड लिंगो यूज करने लगते हैं. यार ये तो अकॉर्डियन, लाइक अकॉर्डियन जो है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एन अकॉर्डियन. ये जो लिस्ट होती है, कुछ कुछ आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, यू गाइस विल नो. जैसे मैंने आपको हैमबर्गर बता दिया, अकॉर्डियन बता दिया, ये दो मेन होते हैं काफी बार. और एक कराउजल होता है ये. सो कराउजल ये जो अपन इस तरीके से जो ब्राउज करते हैं, जो चेंज होता है, जो अब आप स्लाइड कर करके एक से दूसरे साइड पे जाते हो. Right. I'm not seeing it here. I'll give you an example when I see it on the top. But let's just kind of proceed with kind of
So yeah, let's write few. So this is the chat screen I'm showing, right now की chat screen पे जो है जो मेरी chat screen पे दिख रहा है, right? So I am seeing uh, uh, so I'm first seeing this kind of group that is created, right? Uh, and then see now इधर पे एक challenge ये आता है, right? Sometimes, right, I want to actually distinguish, right? Like WhatsApp पे तो बहुत clearly iterated है, right? कि कैसा है, right? But I want to show an element, right? Uh, like I want to keep this my stars above this, right? But ये under जा रहा है, right? So now you have something called layering. So आप layering पे इस पे जाके इस element को select करना है again. नहीं मिले कुछ भी तो आई पे क्लिक करना है और इसको जो है आपको ऑन दी टॉप ले आना है, ब्रिंग फॉरवर्ड. एंड व्हेन यू स्टार्ट ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड इट विल कम ऑन टॉप. सी आई कैन सेंड इट बैकवर्ड, गायब हो जाएगा बिकॉज वो ये ऊपर आ गया. आई कैन ब्रिंग इट फॉरवर्ड बाय क्लिकिंग दिस फॉरवर्ड एंड ये इसके ऊपर आ गया. ये बहुत बार यूजफुल होगा बिकॉज बहुत बार बैकग्राउंड में भी आपको चीजें डालनी होती है, राइट? लाइक इमेज के ऊपर आपको कुछ लिखना है, राइट? So now, now for example, I want to keep it kind of like for so this is one of the uh, pages that is there right now. There is also an image showing up right against everything. So एक छोटा सा एक image का icon भी डाल देते हैं, right? यहाँ पे इस तरीके से. And this is my page, and in this is one of the groups that I have, right? And then within this I kind of will, let's make it a bit more bigger, and then I'll keep some text here, right? I'm just writing any random text here, right? So which shows कि यहाँ पे एक description आता है, right? And I will go about replicating this by changing. मैंने किया क्या, मैंने इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ यहाँ ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया एंड आई जस्ट काइंड ऑफ पेस्टेड इट हियर. सो सी इट्स काइंड ऑफ रियली सिंपल, राइट? नाउ इधर पे एक्चुअली में आपसे जब वायर फ्रेम बनवा रहे होते हैं, राइट, तो आपसे एक्चुअली में ये नहीं कोई टेस्ट कर रहा होता कि आप कोई बहुत रॉकेट स्किल को एग्जीक्यूट करोगे. लोग मेनली आपका ये चेक करना चाहते हैं कि आप जो है अपने फ्लो को रेफर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. बस वो देखना चाहते हैं कि आप लाइक आई टोल्ड यू गाइस, राइट, कि दोनों टाइप की थिंकिंग देखनी है. फ्लो से वायर फ्रेम ठीक होगा, वायर फ्रेम से फ्लो ठीक होगा. एंड समटाइम्स पीपल विल आस्क यू कि हाउ डिड यू गो अबाउट डूइंग दिस असाइनमेंट. सो यू कैन टेल दैट कि मैंने एक बार वायर फ्रेम देखा था, फिर उसमें कुछ इशू आया था. सो Ritik is one of these guys who mentioned, uh, so then I can have a few more. So my brother is there. So Naivedya, basically, even after you create the flow of features, then also after you go to you start making the wireframes, you might think that they have missed out few points or few cases which should be present. Then you go back to the feature flow and then add it on. See, बहुत बार ऐसा होता है, right? Practically speaking, ऐसा ही होता है, right? क्या होगा, ये वायर फ्रेम का सिर्फ पर्पस, सी वायर फ्रेम में सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है, राइट, कमेंट्स. एंड मैं जब आई पे भी क्लिक करता हूँ सब कुछ छोड़ देता है, यहाँ पे नोट्स डाला हुआ है, राइट. रीजन फॉर दैट इज अ लॉट ऑफ पीपल विल एक्चुअली add comments, right?
सो आप जब इसे शेयर करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपना बनाया, राइट, ये मेरे हिसाब से फीचर है, राइट, देन Ritik, maybe if he is your reviewer, right, or Nivedya is your reviewer, right, a lot of time we can add some of the comments which might iterate your flow or might change your wireframe. So that's why so प्रोडक्ट में एक्चुअली में यही एम्बिग्विटी इसका फन होता है, राइट। सो जैसे सर्विसेज में क्या है ना, आप वर्कफ्लो बना देते हो। अभी उसमें क्या है कि अभी जैसे आप बैंक, अगर आप एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम को देखोगे, राइट, तो उसमें तो पता है ना यहाँ डेबिट होना है, क्रेडिट होना है, राइट। अभी तो उसका फ्लो जो है वो बहुत सिंपलिस्टिक होगा इन टर्म्स ऑफ कि उसमें ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। इधर पे देर आर चांसेस ऑफ यू काइंड ऑफ मेकिंग चेंजेस अ लॉट, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये डिजाइन को देख के, राइट, ऋतिक माइट हैव अ कमेंट, राइट, यार इसमें आइकॉन बहुत छोटा नहीं लगेगा, राइट। सो ऑल्दो इट्स नॉट द एग्जैक्ट पिक्चर बट इट गिव्स अ रफ आइडिया, राइट। इट्स मोर लाइक नॉट योर एक्चुअल कार बट कार का मॉडल आप बना रहे हो। उसको देख के समझ आ जाता है ना यार। अभी मतलब अभी जैसे वैगनार का अगर प्रोटोटाइप बनाया होता, वैगनार बनाने के पहले, तो कभी वैगनार नहीं बनाई जाती शायद, राइट। वो जब बड़ी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती वो कार, राइट। तो अगर वो वायर फ्रेमिंग कर रहे होते, राइट, सो दे वुड नॉट हैव मेड दैट बिकॉज दैट कार हैज एवरीथिंग गुड गोइंग फॉर इट, राइट, lots of space and everything, but वो माचिस का डब्बा लगती है, right? So, no, that's the only point why it's not sold, by the way, right? I mean, it's the stalwart cart by Maruti, right? If No, they no have, offense to anyone who's owning a Wagoner, by the way, guys. no offense to anyone. I'm just talking about हाँ, right visual appeal and how balsamic might have helped them, right? यार मतलब स्क्वायर डिजाइन की कार दिखाते तो थोड़ा सा उनको वो लगता। So anyways, this is one of the first screen that I actually wanted to show right now. Now there are few things that I actually wanted to show you guys, right? Like for example, I want to highlight a particular element here, right? So I can go about and actually selecting this rectangle and actually adding a color to it, which might highlight it, right? Like I want this is a group which has to be chosen, right? So I can actually, I have added a color to it, right, so that my attention goes to this page, whereas these two are individual people, right? और याद है हमने फ्लो में क्या डिस्कस किया था? We talked in the flow about we talked in the flow about building this feature specifically first for people in groups, right? तो हमने कहा, हमने बोला था कि यार हम ग्रुप के लिए बनाएंगे, राइट। तो हम इसलिए ग्रुप को हाईलाइट कर दे रहे हैं, राइट। नाउ एसेंशियली नेक्स्ट स्क्रीन विच वी वुड, सो अभी एक बार स्क्रीन बन जाती है ना, तो अब होगा स्पीड पे काम, राइट। अब क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को ये सारे एलिमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है, राइट। और इसे या तो मैं दूसरे पे पेस्ट कर दूंगा या मैं सिर्फ इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। अब मुझे सिर्फ फटाफट क्या करना है, अब मुझे सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, राइट। सो नाउ आई वुड गो within my stars kind of page, right, and then essentially kind of build upon it. सो नाउ इधर पे अगर मैं बेसिकली अगर मैं अपने ग्रुप के अंदर जाता हूँ, राइट, तो द वे इट लुक्स लाइक इज दिस। आप आई गेस आप लोग भी अपना ग्रुप एक बार देख सकते हो, राइट, कैसा दिखता है। सो देयर इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लेफ्ट आइकॉन, राइट। सो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज देयर, राइट। एंड देन उसके बाद एक इमेज डली हुई है, एंड देन नाम एंड उसके बाद जो है इमेज के बाद then group name is there and group member names are there, right? So I would go about selecting it here, right here. It's the image, right? Now my stars I already have written here, so I'll just copy it here, right? And then I'll add the people as well, right? So people are these, right? So let's see. P equal is uh,
Let's write. I'm just writing random names, right? Something of this sort is kind of written, and then you have kind of उसके बाद हमारे पास तीन आइकॉन्स होते हैं, राइट? एक वीडियो का आइकॉन है, राइट? सो लेट्स जस्ट टाइप इन वीडियो कैमरा, एंड वीडियो कैमरा का साइज जो है मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, राइट? एंड देन वी हैव समथिंग फॉर कॉल्स, राइट? Now I'll type in calls, call, and yeah, there is a phone icon which I can have, and I'll just make it small. सर्च से इसको रिप्लेस कर दूंगा. ठीक है, ये कुछ कुछ लगने लगा. ग्रुप टाइप का पेज, राइट? नाउ essentially then essentially below it, right, I have my messages running in the normal manner. So messages जो है, let's keep these rectangles because we want to kind of highlight it, राइट? और व्हाट्सएप पे भी जब आप मैसेजेस लिखते हो तो कुछ इसी तरीके से होते हैं मैसेजेस, राइट? जो मैसेज मैंने लिखा होता है वो हमेशा राइट अलाइंड होता है, जो दूसरे का मैसेज होता है वो हमेशा लेफ्ट होता है. दिस इज द डिजाइन. सो ये जो सारी चीजें हैं ये डिजाइन गाइडलाइन में फॉलो होती हैं, राइट? हर कंपनी की एक डिजाइन गाइडलाइन होती है. जैसे ऋतिक के भी जो ब्रोशर वगैरह ये बनाते हैं ब्राइटिगो के, राइट, दोस हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ डिजाइन गाइडलाइन की बेसिकली हमारे प्रोडक्ट में जो चीज है वो उसमें ये चीज को इस फॉन्ट में इस साइज का रखा जाएगा. And then you can kind of let's resize it, and then I just have it here. Let's type something now. Everything is sorry to interrupt. Mhm. The design guideline would be prepared by obviously the designer. The design team, right? Got it. And so I was just thinking, Mhm. अगर suppose by chance अगर आपके UX में कुछ issue या कुछ हो गया and that wasn't found earlier, it was taken up by the designer, उसने बना दिया, developer ने screen भी सब कुछ कर लिया, and डेवलपमेंट के ड्यूरिंग आपको रियलाइज हुआ अरे ये तो ठीक नहीं लग रहा है, दिस इज अ बैड यूजर एक्सपीरियंस. सो इन दैट केस व्हाट वुड यू डू? यू वुड अगेन मेक इट चेंज्ड और वो टाइम वेस्ट हो जाता, और या फिर निकाल के See, नेक्स्ट वर्जन? see, it's again, I mean, it's a very subjective thing, right? Like, for example, if I am kind of designing a flow which introduces a new feature, right? But that feature is non-transactional in nature. जैसे कि अगर मैं WhatsApp पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट, तब तो मैं एक भी वो नहीं करूंगा क्योंकि वो ट्रांजैक्शनल इन नेचर है, राइट? पर अगर मैं कैलेंडर कर रहा हूँ, राइट, एक कैलेंडर गलत बुक हो सकता है, राइट? ठीक है, राइट. नाउ एक कैलेंडर गलत बुक हो सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट? वर्सेस एक पेमेंट ही गलत चला जाए, राइट? राइट. बिकॉज उसमें एक लाइबिलिटी बन जाती है. तो Obviously. इन दीज केसेस, राइट, आई वुड स्टिल गो अबाउट कि यार चलो ठीक है, इसका MVP 1 लॉन्च करते हैं और इसको सिर्फ मे बी 0.1% ऑडियंस पे लॉन्च करके देखते हैं. तो बहुत बार क्योंकि ये फीचर रोल आउट, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फीचर प्लग. क्या होता है कि आप जब बिल्ड कर रहे होते हो ना नई फंक्शनैलिटी, तो क्या होता है कि आप जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो गिटहब करके एक टूल होता है, हाँ हाँ, उसमें अपने कोड को कमिट करते हैं. उन्होंने जो कोड लिखा है, इट्स लाइक एडिंग ब्रांचेस टू योर ट्री, राइट? राइट. राइट. तो वो ब्रांच ऐड करते हो और वो उसमें फीचर प्लग ऐड कर देते कि अगर मेरे फीचर में इतने से ज्यादा अगर एरर्स आए ना, ऑटोमेटिकली फीचर जो है प्लग लग जाएगा और बेसिकली मेरा पुराना फीचर ही चलने लगेगा. ओके, काइंड ऑफ रोल बैक हो जाएगा. हाँ हाँ, ऑटो रोल बैक हो जाएगा, राइट? सो there's something called there's actually in companies like Adobe, there's someone called release manager who actually handles this only, कि बेसिकली रिलीज करनी कैसे है, राइट? कितने % लोगों पे करनी है, कितने लोगों को करनी है, कौन सा फीचर किसको देना है, किसको नहीं देना है, एंड ऑल दोस थिंग्स ही काइंड ऑफ हैंडल्स इट. सो
But in startups mainly, or the companies like Amazons of the world, right, and the companies like uh, Facebooks of the world, right, their releases are mainly planned in coordination of product, and there's someone called program manager. और उधर पे जनरली कंज्यूमर फेसिंग, क्योंकि देखो कुछ भी डेटा नहीं है मेरे पास, से अच्छा है कि कुछ तो आ जाए। मतलब फेल होना भी तो एक डेटा पॉइंट है ना, ट्राई नहीं करना तो सबसे खराब है, राइट? Right. तो वो दैट्स देयर, राइट? So now idhar pe, right, I wanted to add something called as a calendar feature. Right now I would actually go about searching the icon for a calendar, and actually would have something like set a calendar. So this is one of the ways where I can go, right, setting a calendar, right? And then I can add a arrow, right, saying ki this is one of the ways where we can go about it. There are multiple other ways, right, where I can actually introduce this calendaring, right? So now I want to ask you guys, right, how calendaring works at different places, right? Kaise kaam karta hai? So one option is to keep it somewhat similar to what Google does currently. So there would be one section in calendar ka, wherein your timeline of for that entire month is seen. Like wo din mein either how many meetings you have, and वैसा दिन another view can be monthly or weekly or something like that. हाँ, पोस्ट को डिस्कवरी के आइकॉन आप कहाँ रख सकते हो, राइट? एक तो ये है, ऐसे मैं कैलेंडर की बटन रख दूं, और ये पहले वाले पेज पे भी एक कैलेंडर बना देता हूँ, कैलेंडर करके सेक्शन बना हाँ, देता तो वो पूरा इसका हो जाएगा, दैट वुड बी फॉर द एंटायर वीक और डे, और फिर अंदर ग्रुप के अंदर दैट शुड बी दैट ग्रुप स्पेसिफिक कि कितने ये रिकरिंग मीटिंग्स है हूँ। वो Got it. So that's one of the ways, right? Or is there an even smarter way of doing that? Uh, So instead of putting an icon on calendar, mhm. when we type something like let's meet up on Wednesday, something like that. So on the Wednesday or something, there should be a link that comes up and you can click it, and the option comes as schedule a meeting. Awesome, awesome. Who is it? Vivek. Vivek. By Awesome. by Uh, any uh, by uh, any chance, do you guys also used any dot do, right? So what exactly they do? So we just gonna be typing about like maybe uh maybe I going to type like please like just ki the point is in any dot do app, so what we do is like please arrange a call with Vivek at, or please remind me to call Vivek at 8:30 p.m. So it's gonna be automatically remind me, right? But it's actually a third party app, but again it can also be done, right? yep, yep, yep. And so I have not used the tool that you have mentioned, but I have used a tool which has offered this functionality and has exploited it a lot. It's called Slack. Let me share you the screen. I think let me share your screen. I think it's gonna be a very useful tool, guys. uh like let's talk about, let me share you my screen, guys, because it's gonna be help you a lot to understand like any. So do I do that, and I have a premium model, so let's assume that uh so call Ali at, or maybe uh at 10 o'clock p.m. मतलब 10 p.m. maybe कुछ भी लिख सकते हैं अब आप. Mhm. So it's automatically gonna be remind me on this. I think अभी ये आया नहीं, हाँ. So this also be the One maybe of to the ways. make it realistic, or maybe to make it minimal, one of the way Minimalistic. to Yep, make yep. sure. And that's how, and I going to give the reminder to or maybe something, right? So and just it's just a small uh, I just want to share you guys कि ये भी एक tool है, right? So you can actually can type down, maybe you can just need to call Vamsi sir, call Ayushman tomorrow at 10 a.m. So they're going to give me a reminder, and we can also do same with meetings. Yep, So yep. yeah. So I guess
You know what? This is one of the what you have actually told, right? Is actually something which you spoke about, right? Keeping the design minimalistic in nature. So, Mm-hmm. like, this is one of the fundamental design principles, guys. You have to keep in mind. Minimalistic सुनने में बहुत सही लगता है, पर बहुत मुश्किल होता है, Correct. राइट? आप अगर सामान खरीदने भी जाते हो ना, तो देखो, आप एप्पल के लैपटॉप में सबसे कम चूचा होता है, लेकिन सबसे महंगा वही होता है, राइट? द रीजन फॉर दैट is कि simplistic design में you have to process a lot of thing at back end, right? Just when Ritik typed, right, कि schedule a call at 11 p.m. with Ali, right? You know what? उसी समय उन्होंने जो है text processing करी, right? उसी समय उन्होंने basically अपने कैलेंडर की एपीआई को हिट करा, उसी समय उन्होंने कैलेंडर का लिंक जनरेट करा और उस कैलेंडर लिंक को दिखाने के लिए एक स्क्रीन बनानी पड़ी, right? So there is a lot of back end happening to bring that simplicity in front, right? So probably if you add an True. icon here, right, और आप इंटरव्यू में मुझे अगर ये icon add करके दिखा देते, right, I would say okay, cool, right? But if you kind of tell me, right, that whenever I kind of type in slash calendar, maybe, right, or maybe I just type in, right, schedule a call, right, with Nevedya, and जैसे ही मैं ये टाइप करूं and maybe something of this sort comes up, right, जहाँ पे मुझे को एक यहीं पे ऑप्शन दिख जाए, राइट? जैसे व्हाट्सएप पे आजकल दिखने लगा है, राइट? डू यू वांट मी टू सेट अ मीटिंग विद हिम? डू यू प्रेस एक्सेप्ट और प्रेस रिजेक्ट? जैसे आपको नया कॉल आता है, राइट? देन आई वुड एक्चुअली बी काइंड ऑफ मच मोर इंटरेस्टेड टू काइंड ऑफ स्पीक विद यू, राइट? अरे हाँ यार, ये सही चीज डाली है उसने कि अगर मैं ऐसा कुछ दे दूंगा जिसमें एक्सेप्ट रिजेक्ट आ जाता है, राइट, देन आई वुड लव इट, राइट? देखो, इसने सिर्फ टाइप किया है एंड देन व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट समझ के मेरे को बोल रहा है कि राइट, स्केड्यूल स्केड्यूल कॉल करना है, स्केड्यूल अपॉइंटमेंट, राइट? सो right, so this is one of the ways, right, which where your kind of use of this tool will actually be helpful. अभी आप समझ रहे हो वायर फ्रेम क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी ये विजुअली दिखाया तो ये आइडियाज आ रहे हैं, ये विजुअली दिखाते ही नहीं तो अपन को कभी समझ ही नहीं आता यार, अपन कहाँ कैलेंडर क्यों डाल रहे हैं, वाई कैलेंडर यहीं डाल दो ना यार, एक सेक्शन है, राइट? यहाँ पे भी ऐड करना बहुत ब्यूटीफुल है, राइट? इट्स बट इट हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, राइट? सो इंटरव्यूअर विल नॉट बी क्वेश्चनिंग कि यहाँ क्यों डाला या ये आइकॉन क्यों डाला या ऐसे क्यों करा, बट यू हैव टू बी एबल टू डिफेंड इट कि सर यहाँ पे आइकॉन दिखाने में मेरे को एक्चुअली सी इधर के भी मेरिट्स हैं, यहाँ आइकॉन दिखाने में एक्चुअली में आप डिस्कवरी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो, यहाँ पे किसी को लिखना पड़ेगा स्केड्यूल अ मीटिंग विद नैवेद्य, बट अगर वो आधा हिंदी और आधा इंग्लिश में लिख दे तो in those cases, right? yeah, एक बार. Or else if you even if the word schedule or meeting comes, तो वो pop up आ जाएगा where it asks you to for the place and time. So you don't need to type that. You just need to select that. So हाँ. और what if ऐसा लिख दिया schedule meeting with नैवेद्य on Google Meet? तो वो उधर, right. हाँ, अब क्या हुआ, आप मांग गूगल मीट में रहते, व्हाट्सएप अपनी अलग अपनी राम कहानी स्टार्ट हो गया, बहुत कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी हो सकता है. yep. So it might redirect to a wrong flow, right? So what you actually need to then, ये चीज यूजफुल होती है जो हमारा यहाँ पे हम But don't you think this approach is something hindering the privacy? Like people का mentality होता है कि okay ये थोड़ा ज़्यादा अब अंदर घुसने लग गया, text read कर रहा है and those things, rather than keeping it straightforward up कि okay मैं देख रहा हूँ, मैं click करके and that's it. amazing. You know who is this guy? Priyam. Priyam, you actually pointed out that Priyam. Priyam, actually you pointed out a very big compliance requirement. आप यूरोप में ऐसा फीचर लॉन्च ही नहीं कर सकते. Correct, yeah. यूरोप में टेक्स्ट पढ़ना अलाउड नहीं है व्हाट्सएप. प्रियम को यूके भेजो. हाँ, इस पीएम को यूके भेजना चाहिए. जीडीपीआर कंप्लायंस आपने बता दिया, राइट? एक्चुअली में दिस माइट फ्रीक आउट पीपल, राइट? यार तूने मेरा टेक्स्ट कर लिया, शेड्यूल अपॉइंटमेंट मैंने बोला और तुमने कर लिया, राइट? एक बंदे के दिमाग में क्या चलेगा? अब मैंने मान लो इसमें कुछ लिखा है, राइट?
right? Maybe I wrote something very kind of personal, right? He might have read that as well, right? Also, think about like this. Suppose you wrote, ki, okay, connect with someone who is not even in your contact list, and he, like, okay, like he's not in your WhatsApp this number range or somewhere. He's connected you via Google account or somewhere other way, and WhatsApp tells you, ki, okay, he's not in your contact list, so he's from the Google account. Maybe like that also can go in. Like in the case of mail ID, right? So whether the person is not in our contact or not, so हमने अगर मेल आईडी गलत लिख दी तो उसके पास भी वो मीटिंग का लिंक पहुंच जाता है, right? That's what you हाँ, are talking about. वो भी है। और मतलब कैसा कि सपोज मैं व्हाट्सएप के वाया अली से कनेक्टेड नहीं हूँ, Correct. स्टिल आई राइट कि ओके अली से कनेक्ट हाँ करना हाँ है, हाँ बट हाँ व्हाट्सएप हाँ हैज अदर सोर्सेज आल्सो। तो मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अली की जगह आलिया हो गया. Hmm. करेक्ट। Exactly. So Correct, we correct. can also like इधर pin option है wherein we can share the location, videos, images जो हम लोग currently use करते हैं, उसके अंदर भी एक calendar का icon डाल के कर Yep, सकते yep. Hmm. All those things you can go about it, right? Like for example, यहाँ पे एक icon हमने add कर दिया, right? Similar to how we have it when we kind of जो attachment का अगर आप button click करते हो, right? तो 25 चीजें और खुलती हैं, तो एक calendar करके icon दे दो, right? हैं। When you kind of click on it, let's highlight it, right? अगर आप इसको click करो, right? तो अंदर से फिर एक पूरा rectangle खुल जाए, right? आएगा drop option, जिसमें एक पूरा इस तरीके से आप बात कर रहे हो, राइट? right, सी, अब आप वायर फ्रेमिंग के कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, क्यों है ये इंपॉर्टेंट? right, मैं जब ये सी एक बहुत बड़ी बड़ी गलत धारणा है कि पीएम का काम आइडिया लाना होता है, राइट? पीएम का काम आइडिया लाना नहीं होता है, पीएम का काम होता है वो मीडियम देना जहां पे आइडियाज खुद आए। hmm, जैसे एक एंटरप्रेन्योर का काम जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल ऋतिक जॉब इज नॉट टू काइंड ऑफ डू एवरीथिंग, राइट? हिज जॉब इज टू इनेबल पीपल टू डू थिंग्स, राइट? hmm, And then people can kind of get value from that and he'll get value back, right? तो सिमिलरली पीएम का काम होता है, उसका काम है एक प्लेटफॉर्म देना, ये वायर फ्रेम के बाद आपसे डिस्कशन कर सकता है कोई, राइट? उसको right, उसको उसको चमकाना है, बेसिकली द राइट वर्ड इज उसको चमकाना है। मेरे को चमकाना है आपको कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, राइट? तो मैं उसको चमकाने के लिए आपको जो है बेसिकली ये दिखा रहा हूँ आपको कि यार ये देखो, आप ऐसा मैं कुछ सोच रहा हूँ, राइट? सो then these functionalities, right, kind of come into picture, right? Like for example, notes you can add, right? There's another functionality where you can kind of share it with other people, right? You can invite people. A collab, lot of time आपका ऐसा है, आधी टीम यूएस में होगी, आधी इंडिया में होगी, राइट? हाउ वुड यू गो अबाउट इट, राइट? So this is how you can kind of use it. I actually wanted to show you guys few more things here, right, which are kind of very very useful. So अभी ये वायर फ्रेम बन गया है, राइट? बट ये वायर फ्रेम आपको अपने मैनेजर को भेजना है या आपको अपने इंटरव्यू के लिए भेजना है, राइट? So the thing you can do is you can actually export these individual items into PDF, and there are features for exporting all those to PNGs as well, right? And I was telling you guys, right, मेरे को जो है इस पेज को जो है काफी रियलिस्टिक सा दिखाना है, right? So how would I do that, right? सो फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो है ये वाली जो स्क्रीन का सेक्शन है, राइट, यहाँ पे मेरे को सपोज, राइट, आई वांट टू ऐड a realistic kind of a calendar, right? So what I would actually go about is, right, I can actually download an image of a calendar, right, and then kind of do some kind of कह लो आप बहुत ही scrappy kind of photoshopping on a PowerPoint, right? Like for example, जैसे मेरे को अगर यहाँ पे ये दिखाना है, right? So icon
काफी रियलिस्टिक सा दिखाना है मुझे, तो आई विल डाउनलोड समथिंग लाइक दिस. So I kind of download something like this. मैंने image download करी, and I can actually then open my PowerPoint. ये कुछ चीजें बहुत काम आती है आपको जब आपको पास डिजाइनर होता नहीं है और आपको जो है सीईओ का मेल आता है, यार अगर नहीं है तो तुम ही कर दो. तो अब जैसे मेरे को यहाँ पे ये जो कैलेंडर देना है, तो इसको मेरे को इसको थोड़ा सा व्हाट्सएप स्टाइल का कैलेंडर देना है, राइट? सो आई कैन देन एक्चुअली go about inserting an image for, maybe I want to have a WhatsApp kind of logo, right? So let's download one of the icons that we have here. So, I mean, calendar by WhatsApp, right? Maybe we want to keep it something, call it that ways. And then I can actually take another image of this super image. And then use this, then simply just place this image over there, right? So, yeah, let's search for today. Yeah, I got the image here, and let's kind of do इसको एक बार resize करूँ. And I actually kind of place it over here, right? So I have this as an asset, right? Now I can keep this kind of an icon if I want to keep, right? अब आपको डेवलपर से लोगो जो है दिखाने की मतलब लेने की जरूरत नहीं है, राइट? Maybe I can have something like calendar by WhatsApp. So, and you can also kind of do, like for example, जैसे अभी मुझे पेटीएम के लिए एक नया वीजा कार्ड का, इन लोग वीजा कार्ड लॉन्च करने हैं, राइट? तो मैंने क्या किया था बेसिकली, उन लोग ने बोला था कि वीजा कार्ड हमारा देखेगा कैसा, उस पर डिस्कशन चल रहा था. तो मैंने वीजा इनफाइनाइट के कार्ड को उठाया और यहाँ पे जहाँ वीजा लिखा हुआ था, I'm just giving you an example because this is very kind of useful for you guys to kind of make hyper realistic wireframes and immediately throw back to management any kind of question is thrown or through the interviewer. या आप मेरे को 1 मिनट दोगे, मैं आपको बता रहा हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ. तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो वीजा वाली जो इमेज है, राइट, इस ये हम लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मेरे से कल हो रहा था कि कैसा कार्ड जो है देखेगा वीजा का, डू यू हैव एनी आइडिया इन माइंड, राइट? एंड आई काइंड ऑफ जस्ट टोल्ड हिम कि आई वाज इमेजिनिंग समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे वीजा इनफाइनाइट लिखा हुआ है, राइट? आई वुड जस्ट गो, एक छोटी सी मैं इसके ऊपर के हिस्से की एक इमेज ले लूंगा, राइट? And then kind of place this image on top of it. ये मैंने इमेज ली, ये आप लोग ने आई एम श्योर कॉलेज में किया होगा. they kind of जुगाड़ करके कुछ edit. Exactly. We have done during the assignments, right? नाम छुपा देते थे हम लोगों का. No, so बिल्कुल देखो, लोग बोलते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई बेकार होती है या स्कूल में पढ़ाई बेकार होती है. मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं होती है. उसमें जो गलत काम करें वो ही काम आते हैं. अब यहाँ पे मैं जो है सिंपल जाऊंगा या सिंपल यहीं पे एक टेक्स्ट डाल दूंगा इसी टाइप का, एंड आई विल जस्ट कॉल इट कि यार ये देखो. अब पता है आपका जो मैनेजर है, राइट, वो पता है क्या बोले, भाई इतना जल्दी ये कैसे ले आए. उसको पता भी नहीं होगा. हाँ, उसको अरे यार देखो, पहली बात तो आप किस मुल्क में रहते हो, आप भारत देश में रहते हो, राइट? जहाँ पे जूम और जियो कॉपी हो जाता है. हाँ, ठीक है. तो ये जो है, ये देखो बढ़िया सर, ऐसा दिखेगा. मैं तो ऐसे टाइप के कार्ड का बोल रहा था आपसे, ठीक है? अब इससे ज्यादा भी मत कर देना, वरना फिर वो तुमको एज अ डिजाइनर भी यूज करने लगेंगे, डिजाइनर को हटा देंगे,
और फिर बोलेंगे एक काम करो, तुम तो कर ही लेते हो डिजाइन, तो एक काम करो, तुम एक डिजाइनर का भी काम कर दो। लाइक जैसे बहुत से जो टेक में पीएम होते हैं राइट, तो जो जिन्होंने काफी कोडिंग करी होती है तो उनसे कोडिंग भी करवाना चालू कर देते हैं, तो तुम ही कर लिया करो, एक काम करो। तो ये लो भाई, पेटीएम इनफाइनाइट कार्ड हो गया, बढ़िया लग रहा है, और पेटीएम का शेड भी अलग सा है, थोड़ा स्टाइलिश भी हो गया, राइट। एंड आई जस्ट कीप दैट, राइट, एंड मैंने इसको दिखा दिया था, राइट, एंड दे वर लाइक ओ भाई बढ़िया है, राइट, एटलीस्ट फॉर शोइंग टू मैनेजमेंट तो हो गया ना काम, राइट। कई बार पीएम का काम होता है कि उसको अगेन राइट, पीएम इज द एनेबलर, फोरम देना है, फोरम देना है। अब देखो आप, बढ़िया एकदम इमेज आ गई कि लोग कोई बोल भी नहीं सकता ये किसी और का काम है, right? So these are some of the hacks that you can actually use it, right? Baki as such balsamic में, right, all the icons and everything are available for you on the tab, right? There's not much required. What really was important, right, to bring you to the point where you understand the importance of balsamic. Like जो हमारे वो 10 मिनट का डिस्कशन हुआ था, right, and when we were talking about, when actually Ritik showed you an example and you guys told कि यार पता है ऐसा करने पे यूजर्स फ्रीक आउट हो जाएगा, right? For me, listening that thing from someone would actually be worth more than an entire product discussion, because product in concern is WhatsApp's trust, right? ये सारे products trust पे build हुए हैं, right? और आपने बिल्कुल वही एलिमेंट हिट कर दिया, अरे यार ये तो फ्रीक आउट हो जाएंगे लोग, राइट। नाउ दिस पॉइंट इज व्हाट विल एक्चुअली ब्रिंग मतलब विन यू पॉइंट्स, राइट। लाइक आप अगर ये 4 पॉइंट्स गिरा दोगे ना इंटरव्यूअर को कि यार ये देखो, यहाँ आइकॉन रखने के ये 4 फायदे, ये 4 घाटे हैं, यहाँ रखने के ये 4 फायदे, ये 4 घाटे हैं, राइट, आधा इंटरव्यू तो वहीं खत्म हो गया है। उसके बाद उसको यही तो समझना है आपसे कि यार आप क्या राइट पॉइंट पे राइट क्वेश्चन रेस कर पा रहे हो, Right. so that is how you can kind of go about it, right? Now most of the other features, right, so balsamic also gives you kind of other abilities to kind of also do a lot of things, right, जो अभी इन्होंने recently launch करा है, like you can build a prototype and everything, but I think there is a better tool for it called Marvel app, which kind of which is which you guys can also explore, right? It's also very simplistic in nature, right? But the core element that I wanted to cover was this only, right? To show you, right, how we would actually go about breaking down the problem, where wireframing is important, how you can make your wireframes, right? And why to make, why you should always present wireframes before presenting any idea to anyone, right? What is, how you would spark the conversations, right? Like किस एलिमेंट पे क्या क्वेश्चन है, और इधर पे यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका इंटरव्यूअर को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है आपसे बैल्समिक आता है कि एक्सेवर आता है, उसको इंटरेस्ट है इस चीज में कि यहाँ बटन रखने पे और यहाँ बटन रखने पे आपसे आपसे अगर किसी ने पूछा कि यहाँ क्यों रखा है, यहाँ क्यों नहीं रखा, तो आपको उसका कारण पता होना चाहिए, Right. सो वो बिकॉज इट्स ऑल अबाउट क्यों और क्या, राइट। Exactly. तो हाउ तो है वो हो ही जाता है, राइट, आई मीन यू फाइंड वे, राइट। जब किसी को जब छोटा बच्चा होता है, मेरे को डॉक्टर बनना है, तब थोड़ी ना उसको पता होता है कि यार वो बच्चे को यार हार्ट के अंदर जो है आउर्टा भी होती है एक, वेना कावा करके भी होती है एक, इतना नहीं पता होता। वो तो स्कूल में आके उसको पता चलता है, अच्छा हार्ट ऐसा दिखता है, उसके पहले तो उसको ऐसे ही लगता है ना वो हार्ट जैसा अपन वैलेंटाइन डे में देते हैं वैसा दिखता होगा। Right. Correct, 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 correct. Well, that's how it is. Naina? Guys, it's now open for your questions, right? I am so it's one of my approaches I always follow. I don't cover things. I try to invoke people so that they start uncovering it, right? Uh, my idea is not to kind of give you उसके लिए product manual already Balsamic ने बनाए हुए बहुत बेहतरीन. My idea is for you to kind of start using this tool in your day-to-day life to comprehend day-to-day ideas.
So Open for Q&A, guys. And it's really interesting session. Nivedya, I'm really happy, right? The kind of a like it's so relatable ना कि जो situation based होती हैं चीजें वो आप सामने लेके आते हो, that makes much more sense, and at the same point of time we can relate to the situation because कहीं ना कहीं हम भी उस situation का part हैं. As a in a company we also the part of the situation, but वो सामने से आके हमें बताते हो ना तो वो कहीं ना कहीं relate लगती है, and that's the I think that's very beautiful. I think that's very informative. So, yeah, I guess thank you, Ritik, for giving me the platform. So, guys, by the way, right, Ritik, I don't know, right? You guys share the recording or what? Exactly, we share the recordings. Okay. So, guys, इसमें 3-4 behavioral questions भी covered हैं, like how to work with designer, right? How to work with developer, what kind of questions developers ask, what kind of questions designer ask, right? डिकोड एंड कॉन्कर या कोई भी ऐसी 50 बुक आती है उसमें पूरा एक सेक्शन बना हुआ है, राइट? एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम्स होती है. मतलब कोई भी रॉकेट प्रॉब्लम तो आई नहीं है आज तक. प्रॉब्लम हमेशा ये आती है कि आइकॉन नहीं मिल रहा है. यार वो वाली फाइल कल डाली थी तो वो डिलीट हो गई थी. आज डिजाइनर आया नहीं है और मीटिंग में प्रेजेंट करना है आज, और वो सीईओ को प्रेजेंट करना होता तो ठीक था, इन्वेस्टर आने वाले. अब ये अभी करना है, बताओ कैसे करना है. और आप जो है ये आपके जो कॉलेज के जो स्क्रैपी स्किल्स हैं वो उसी दिन काम आते हैं. चलो लाओ, अब कोई नहीं कर रहा है तो मैं कर दूंगा. इसलिए नहीं कि मेरे को कोई बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए कि काम करना है तो करना है. सबसे क्रिटिकल मोमेंट्स पे ही वो सब याद आता है. हाँ, तब आपको ये याद है, यार ये वाला भी तो जुगाड़ है ऐसे. एग्जैक्टली जब जैसे लास्ट में जैसे प्रैक्टिकल फाइल चेक होती थी, राइट? तो कई बार वो फर्स्ट पेज फाड़ के किसी और अपना पेज अपना नाम लिख के एंड एंड मूवमेंट पे दे देते थे सिर्फ मार्क्स के लिए. मतलब मैंने तो काफी बार किया है प्रैक्टिकल फाइल्स का. तो ऐसे ही. Ritik, I mean, I just want to end with with a point, right, in everyone's mind, right? So when I was doing assignment way back in Triple IT in 2013, right, all kids were busy. यार ये Turnitin करके सॉफ्टवेयर आया था जिसमें जो है आपका प्लेगरिज्म चेक हो जाता है, राइट? रिसर्च पेपर वाला. हाँ, तो सब बच्चे क्या करते थे, जैसे यू मिस्ड माय कॉल तो इंटरनेट में और भी जगह होगी ना, कॉल इज बीइंग बिस्ड बाय मी, राइट? मतलब हर पैसिव वाला गेम. फेस करके. हाँ एग्जैक्टली. पैराफ्रेज कर देते हो आप. और तो उधर फिल्टर्स भी है, तो इफ यू हाँ पैराफ्रेज कर देते हैं. जीरो पैराफ्रेज. There was one intelligent guy in my batch, right? He is now working with Apple. उसने क्या करा, उसने सिर्फ मेहनत करी कि टर्निट इनको कैसे, इतनी मेहनत मुझे नहीं करनी, हर सेंटेंस को रिफ्रेश नहीं करना चाहता हूँ. उसने क्या करा, एल को 1 से रिप्लेस कर दिया और ओ को 0 से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, और पूरे को चला दिया टर्निट इन में, और आ गया कि यार 95% ओरिजिनल है, मतलब 5% ही प्लेगरिज्म, which is within acceptable limits, right? Wow. So whereas everyone was doing hard work, right? ठीक है, this guy did a smart work, identified the error in Turnitin itself, right? So that's what your what will make difference in मतलब for you guys, right? क्या आप बेसिक चीजों को भी क्वेश्चन करते हो. उसने ये पता लगा लिया था कि टर्निटिव काम कैसे करता है, बहुत दिमाग नहीं लगाया. उसने बोला यार ओ को अगर 0 से रिप्लेस करो, को 1 से करो तो क्या होगा. और देखो आप, मतलब 100% प्लेगरिज्म में भी 5% आ रहा था. बढ़िया एमटीपी सबमिट हुई थी, 9.7 था सीजीपी लास्ट सेमेस्टर का. चाहिए आप राजेश कुमार करके बंदे को सर्च कर लो लिंक्डइन पे, पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज, अगेन अ वेरी बिग कंपनी, एंड देन नाउ ही इज वर्किंग फॉर एप्पल. मेरे बिल्कुल सामने की बात है. तो मैं उस समय अमेज था, मेरे को लग रहा था भाई ये बंदे ने बहुत दिमाग लगाया है. करेक्ट. तो आप चीटिंग भी अगर करो ना तो स्टाइल से करो, स्मार्ट वर्क से करो, स्मार्टनेस से करो. कि नकल के लिए भी दिमाग, अकल की जरूरत होती है. हाँ एग्जैक्टली. करेक्ट. Actually, I wanted to ask you, ये अभी इसके अंदर UX के अंदर, as we all discussed, that there are lot of various ways of implementing same feature, right?
So at the end of the day, obviously you have to select only one path. Mhm. So in that case, how would you prioritize and make that decision? Like internal discussions करके या फिर A/B testing करने में वापस फिर multiple flows the developers have to create सी for that. ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आईएनडी है, राइट. सो आईएनडी में, राइट, आशीष इज वेरी कंट्रोल फ्रीक, राइट. नाउ आशीष के साथ ऐसा होता है कि अगर आप, जब तक आप बिल्कुल बोल नहीं दोगे ना, मतलब अपने हाथ पैर जोड़ के मेरे को करने दो, तब तक वो नहीं मानेंगे, राइट. नाउ अगर ऐसा बहुत बार क्या होता है, सो दिस इज वन ऑफ द वेज यू डू इट, राइट. एक तरीका होता है, लोग बोलेंगे यार ये तो बंदा अपने आप को ही वो समझता है. बात ये है, आप साइंटिफिकली उसको आंसर नहीं दे पा रहे हो. साइंटिफिकली इसको करने का तरीका होता है ए बी टेस्ट. दैट्स दी ओनली वे. आप क्या करो, आपको नहीं समझ आ रहा ना यहाँ बटन देना अच्छा है कि यहाँ बटन देना, इतनी देर डिस्कशन कर लिया, एक काम करते हैं, दोनों फीचर को लॉन्च करते हैं, 5% को यहाँ देते हैं, 5% को यहाँ देते हैं, देखते हैं कौन सा फीचर जो है उसके नेगेटिव कमेंट्स या पॉजिटिव कमेंट ज्यादा आते हैं. Right. Got it. अगर आंसर आपको नहीं निकल रहा है ना, तो बेस्ट है यूजर से ही पूछ लो. And by the way, I'll also tell you one of the very smart ways which is used by Atlassian. Jira करके है प्रोडक्ट उनका, सब जगह यूज होता है सॉफ्टवेयर कंपनी में जीरा, राइट. इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे हम खाने में जीरा खाते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जीरा है. तो ये तो वो लोग क्या करते हैं, डिकॉय बना देते हैं. जैसे आपको कैलेंडर का फीचर देना है ना, अब पता नहीं है कितने लोग यूज करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे, कैलेंडर का आइकॉन दे देंगे और आप क्लिक करोगे ना, लिख के आ जाएगा, सॉरी वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस फीचर, कैन यू प्रोवाइड अस, विल इट बी यूजफुल और नॉट. कस्टमर से ही पूछ लिया क्या बनाना चाहिए. ओके, तो आपके अंदर वो हो गया एप्लीकेशन के अंदर. हाँ, सो इट्स कॉल्ड डिकॉय बटन. जैसे डिकॉय होता है ना. हाँ समझ गया. राइट. बट देन obviously अभी व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन में यू वुडंट वांट दैट टू मीट बीटा टेस्टिंग, वो सब में चल जाएगा या फिर लाइक फॉर अ क्यों स्मॉल नहीं ग्रुप. कर सकता? अगर एटलासियन जैसा कंपनी कर सकती है, विच इज लाइक जीरा, जिसका प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो वर्ड यूज कर रहे हो उसको बनाने वाली कंपनी एटलासियन है, राइट. उसी का तो प्रोडक्ट है जिसमें स्टोरी आता है, एपिक आता है. हाँ वो भी कर सकते हैं. आप कस्टमर को व्हाट्सएप पे का आइकॉन दे दो. व्हाट्सएप पे ने ही ऐसा किया. व्हाट्सएप पे में आप क्लिक करते थे, सॉरी दिस फीचर इज नॉट रेडी फॉर यू. आपको क्या लग रहा है, वो बटन ऐसे ही दे रहा था व्हाट्सएप. वहां पे व्हाट्सएप एक्चुअली में डेटा निकाल रहा था, अगर हम व्हाट्सएप पे लॉन्च करेंगे तो कितने लोग इसको अपने आप ही क्लिक कर लेंगे, राइट. व्हाट्सएप कोई भी बटन फालतू में नहीं देगा. सॉरी दैट फीचर इज नॉट रेडी फॉर यू के लिए तो वो एक एपीआई कॉल कर लेगा, आपको क्यों फालतू में आइकॉन देखा है. What they wanted to do was to gauge your interest. अगर WhatsApp पे आता है तो कितने लोगों को उसको एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट होगा. It's called a decoy. Right? It's one of the smart ways of finding out कि whether this feature is needed or not. So ये काफी सही है. So decoy के बारे में जनरली आपका प्रोडक्ट के अगर आप फाइनल राउंड्स में होगे, राइट. So maybe one of those questions, right, if you kind of tell them about decoy technique, maybe उन्हें decoy word नहीं पता हो, पर आप बता दो कि यार एक तरीका तो ये भी हो सकता है, हम बटन दे दे और बटन को क्लिक करके आ जाए, sorry we are building this feature, right. We are amazed that you are excited about this feature. This can do XYZ. We are just coming up in 2 weeks. Can you give us 1 minute? Click on और कस्टमर से खुद ही पूछ लो. जब कुछ नहीं पता तो कस्टमर ही बता देता है क्या करना है. Right. Got it. So, cool, yaar. I guess, guys, any other question? Last question. It's time to kind of. मेरे को ये था that I have actually asked this before too. Like, what is that one skill which makes you stand out as a PM, and difference in skills required for a B2B and B2C PM? Stamina. Okay, so in the sense of what? Like stamina in terms of kind of consuming information and kind of execution. अगर आपसे स्मार्ट वर्क नहीं आता है तो आप हार्ड वर्क सीख लो. हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. स्टैमिना आपका जितना ज्यादा है आप उतना अच्छा कर लोगे. That's the question, right? Means what makes you stand out as a PM? तो हाँ, so स्टैमिना प्रोडक्ट में होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. जिस कंपनी ने जितना जल्दी जितने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए ना, वो उतनी जल्दी इवॉल्व हो जाती है. इसको हम
टर्म कहते हैं एग्जीक्यूशन वेलोसिटी, राइट? अच्छा. Faster execution velocity always favors you. There's a book called Four Phases to Epiphany, which was the book written before Lean Startup. Lean Startup वाला जिसने लिखा था ना, हाँ. उसकी पहली बुक थी Four Steps to Epiphany. उसमें एग्जैक्टली उसने यही बोला कि यार देखो, कोई भी बिजनेस आइडिया अच्छा है बुरा नहीं होता, फर्क ये होता है कि कौन सा आइडिया कितना तेजी से कितनी बार तुम आइटरेट कर लेते हो. तो the skill that stands out, right, is stamina, right? People जो बहुत अच्छा करते हैं उनका सिर्फ स्टैमिना ज्यादा होता है, बिकॉज मैराथन रेस है ना, फर्क नहीं पड़ता आप 20 पे दौड़ रहे या 15 पे दौड़ रहे या 5 पे दौड़ रहे, बात ये है कि कितना देर दौड़ रहे हो. कितना देर. और वो B2C and B2B और the difference, if there is a difference in skills required. Yeah, there is a big difference, right? So B2B में your focus is less on experimentation and more on perfect execution. Right? B2B is almost like you are opting for valet parking. आप पैसा ज्यादा दे रहे हो पर आपको पर्सनल सर्विस चाहिए, राइट? तो वैले पार्किंग में आप ध्यान रखोगे कि उसकी कार जो है अच्छे से पार्क हो जाए, राइट? जैसे आप लोग मॉल ऑफ इंडिया या कोई भी मॉल में गए होगे तो वैले पार्किंग सेक्शन में पीपल फोकस ऑन पार्किंग योर कार राइट. Whereas B2C is more about providing the biggest space, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां ठुस जाए, right? Or the hit rate, right? So I'll share a sheet after this call, right? I made some notes for myself, difference between B2B and B2C execution. Right? It's a very simple kind of thing, right? Whereas B2B focuses more on workflows, B2C focuses more on experimentation. Flows ही नहीं है ना, क्या flow है? कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंटेशन है ना. तो B2C में एक्सपेरिमेंट करने का ज्यादा मजा है. B2B में अगर आप बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी हो तो B2B में जाओ. अगर आप ऐसे आदमी हो कि जो बहुत डिसिप्लिन्ड नहीं है, B2C काफी अच्छा है फिर. So what actually next question is like, how do you select that which role would actually suit you? नहीं पता चलता ना. आपको कैसे पता चलता है आप टेनिस ज्यादा अच्छा खेलते हो कि क्रिकेट? दोनों खेल के देखते हो. It's always that ways, right? I mean, It always around A/B testing. Again, it comes to A/B testing. You need yeah, to. it again comes to life में भी A/B testing है, right? हाँ, yeah. देखो आप इंटरव्यू दोगे कंपनीज का तो आप जो है जिस कंपनी में आपका हो जाता है, राइट, आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि मैं उस कंपनी से बेस्ट निकाल लूं, राइट? एक ये है कि कंपनी आपसे, तो देखो कंपनी आपको पैसे तो दे ही रही है, आप वो काम, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. हाँ. आपको सबको ही दे देंगे, काम करो पैसे दे देंगे, वो बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं होती. पेन है आपको जो चाहिए क्या वो मिल रहा है, हाँ. और उसको जो चाहिए क्या वो उसको मिल रहा है. और सिर्फ पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, राइट? उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं. आपकी स्किल बढ़ रही है कि नहीं, राइट? वो सब चीजें जो है वो आपको सिर्फ ट्राई करके समझ में आएंगी. देखो मेरे को भी नहीं पता था कि मैं क्या चीज अच्छी कर सकता हूँ जब तक मैंने किया नहीं, राइट? मतलब लिटरली मैं तो कंसल्टिंग में बंदा था, वॉल स्ट्रीट जाने का सपना था, पहले साल वॉल स्ट्रीट पहुंच गया और समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लौट के आ गया. मैंने बोला यार बढ़िया, उबर नई चीज आई है, उबर में जाते हैं, राइट? ओनली कि जिस दिन उबर में सिलेक्शन होता है, ओनली टू रियलाइज कि यार उबर वो कंपनी नहीं है जहां मैं काम करूंगा, राइट? बिकॉज उबर्स थिंकिंग फिलोसफी एंड डिजाइन फिलोसफी इज वेरी डिफरेंट. उनका जो वर्क कल्चर है इज नॉट समथिंग दैट आई एम काइंड ऑफ वेरी अलाइंड विद. Exactly. तो आपको पता नहीं होता है. लाइक अभी ऋतिक को थोड़ी ना पता था कि ब्राइटिगो मेरे को स्टार्ट करनी है, राइट? ही केम टू जोमैटो, राइट, हैविंग जस्ट एक ही चीज थी, मुझे कुछ बनाना है. ये थोड़ी ना पता था क्या बनाना है. तो that's always there. And I think that's the journey, right? So whenever you start your journey, मुझे guys, when we start Brightigo ना, so at a very starting of this stage, हमें पता ही नहीं था हमें पढ़ाना क्या होता है. मुझे खुद को नहीं पता था प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता क्या है. करेक्ट. I was feeling कि यार इतने लोग इतना पैसा दे सकते हैं इस चीज़ का और ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है. लेट्स डू वन थिंग. करिकुलम बनाना तो आपको भी पता है. वी जस्ट प्रेजेंट द करिकुलम टू द फ्यू स्टूडेंट्स और उनको पसंद आया एंड वी स्टार्टेड विद द लाइक सेशंस. एंड गाइस इतने बुरे सेशंस गए थे हमारे, इतने बुरे सेशंस की लोगों ने नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर दिया था मुझे. बट देन वी स्टार्ट इवॉल्व आवरसेल्व्स कि अच्छा ठीक है,
लाइव करते हैं, रिकॉर्डेड नहीं करते, लाइव में ये पार्ट रखेंगे एंड दिस पार्ट गोइंग टू बी अबाउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू इवॉल्व योरसेल्फ। पहले दिन से ऐसा नहीं था यार, पहले दिन से आपको खुद भी नहीं पता था कि कौन बंदा आपके लिए सही है। आप हर किसी को ले आते हो कंपनी के अंदर कि अच्छा ठीक है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट सी योरसेल्फ लाइक अगेन इट्स जस्ट लाइक अ फीलिंग कि हर कोई आपको लगता है कि हर कोई आपको जो फर्स्ट कंपनी का जो बंदा, जैसे जो द फर्स्ट हायरिंग और मे बी द फर्स्ट इनिशियल हायरिंग्स, यू ऑलवेज फील दैट दे गोना बी स्टे फॉर अ लॉन्ग टर्म, बट ऐसा नहीं होता। उनका विजन चेंज हो जाता है, हमारा विजन चेंज हो जाता है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ maybe train you on those lines, that you need to have a very separate ways, need to have a separate mindset. Right. Right. Yes. Correct. So Yes, I Never, if you have any good UX resources or something which has helped you gain a lot of see. knowledge, if you Uh, See, the way I take interviews typically is very different, right? First question generally I ask people in the first 5 minutes is, आपको medium.com में आप आर्टिकल पढ़ते हो या नहीं? अगर आपने नहीं बोला ना आप दुनिया के बेस्ट होगे, मैं तो नहीं हार कर राइट। आप medium.com जैसा सोर्स या आप कोई see all these things are rapidly evolving, right? There is a Google's material design or something coming up, right? The best place to go is medium.com. मैं trust me, 330 रुपीस का I think हाँ वही मेरे को लगा मेरे साइड पे है लाग नहीं 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 पूरा नहीं क्लिप हैंगर पे छोड़ दिया नहीं बट इट्स फन ना, मजा आया आज का सेशन यार, अरे और एक बढ़िया रखते था हैं आज का यार, सेशन, बहुत सही लगा। हाँ जी, और एक रखते हैं सर का क्या वापस। चीज? बढ़िया, मजा आ गया भाई, मुझे तो और बड़ा मजा आया है, बहुत कूल सेशन है यार। मैंने अभी ना रिसेंटली एक बंदे को हायर किया, लाइक आई पेड हिम 40,000 रुपीज, करेक्ट, एंड पैकेज अच्छा खासा है 40,000 एज अ स्टार्टअप, बट हाँ अगेन काम ही नहीं किया तो भाई नहीं हो पाता फिर लॉन्ग टर्म में ऐसे फिर। सो यू नीड टू हाँ सी कि उसका उसका ये था कि उसको 9 to 5 ही करना था, बट फॉर मी 9 to 5 इज नॉट अ थिंग, बिकॉज इवन अली अली यू कैन सी राइट, हम लोग काम ही नहीं करते 9 to 5, वी ऑलवेज बी लाइक कि जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक करेंगे हम, वी विल नेवर गोइंग टू AM है हाँ जी 9 AM to 5 AM। करेक्ट, बहुत सही है, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो वी हैव नैवेद्य अगेन विद अस। नैवेद्य, बहुत प्रॉब्लम चल रही है आपके यहाँ शायद से नोएडा में। नहीं यार, मेरा लैपटॉप की बैटरी वो अच्छा 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 तो या आई एम काइंड ऑफ यार, नोएडा की इतनी बेइज्जती मत करो यार, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। मैं गूगल बिल्डिंग के पीछे रहता था, सेक्टर 15 पार्ट 2 में, गुड़गांव में, वहां से यहाँ आया हूँ, तो मत ही बोलो। मुझे मुझे पता है पता हो आपको, पता है कई बार आप, बिकॉज लाइक गाइज आई ऑल्सो ओन अ स्पेस इन नोएडा राइट, सो कई बार आप जब एयरपोर्ट से निकलते हो ना और आप कैब वाले को बुक करते हो और आप कहते हो नोएडा जाना है, तो वो कैब ही कैंसिल कर देता है आपकी रात को, क्यों? क्योंकि हाँ क्योंकि उसको उसको मिलती नहीं ना वापस वापस, और नोएडा बहुत इंटीरियर है ब्रो, सो काफी फिर वहाँ पे जंगल वंगल भी हैं, तो लोगों को पता भी नहीं कि पैसा देंगे नहीं देंगे अच्छा वो ऐसा भी है। है ना नवेद्य, आपके साथ हुआ है कभी? यार ऐसा भी है, दूसरी चीज सो द अदर, यार गुड़गांव हैपनिंग है, मतलब बहुत ज्यादा हैपनिंग। मतलब गुड़गांव में पता है एक्चुअली में, देखो इंडिया में जनता को क्या चाहिए, इंडिया में जनता को चाहिए कि नॉर्मल दो मोटिवेशन से आपको समझ आ जाता है, या एक डिजाइनर की मोटिवेशन से, मतलब सीधा सीधा है। मतलब लाइक आईएनडी में तो जो अप्रेजल का होता है, मैक्सिमम पॉइंट्स वर गिवन अबाउट पीयर रिव्यू एंड योर डेवलपर रिव्यू, क्योंकि वही मेन है ना यार, आपका डेवलपर ही आपसे खुश नहीं है तो अब आप कैसे वो कर लोगे? राइट राइट। हाँ मतलब, हाँ प्रोडक्ट कैसे मैनेज करो, वो तुम्हारा प्रोडक्ट बनाने ही वाला बोल रहा है फालतू है। करेक्ट करेक्ट But करेक्ट। then don't you think like जो sprints and all like the KPIs for become a PM जो उसके roles के अंदर होता है, so अली in यार that वो साइड इफेक्ट है ही ना, got it। वो तो है ही ना। आप देखो टीम मोटिवेटेड नहीं होगी तो ही KRA ज्यादातर नहीं अचीव होता है, या तो बहुत बड़ा लेते हो।
बहुत बड़ा अगर आप ले रहे हो तो अगेन आपने अपनी टीम के मोटिवेशन के बारे में सोचा नहीं था, आपको हीरो बनना था इसलिए आपने बहुत बड़ा ले लिया, राइट? वो सारी चीजें इनकम्पास हो रही है ना, राइट? Right, right. आप गोल उतना भी बड़ा नहीं लोगे कि अचीव ही ना हो, फिर आपकी टीम का मोरल डाउन होगा। Exactly. So Ali, let's like Nivide is onboarded as a he's a product leader right now for the Brightigo. So you're going to get a more chances to ask doubts or maybe to like solve your queries, right? So right now we are just wrapping up the session, guys. Sure, Ali, sure. really Thank you so sorry much, for that, Nivedita. bro. Thank you. Right? I hope you understand, correct? ठीक है. Oh, So sure. Thank you so thank you much. so much. Thank you so much, Nivedita, for taking out such a great time and spending such a great knowledge and sharing such a great advices, right? I'm really happy. And ये session मेरे लिए काफी ज्यादा important इसलिए था because I just want to understand Balsamic as well, because मेरी team अभी Balsamic में काम कर रही है, and right now also I just want to be the part of it, कि कहीं ना कहीं as a founder you need to have that back of your mind कि क्या कर रही है team, आपको हमेशा लग रहा था. So for me it was such a nice session, and Navidya, believe me, मुझे मुझे होस्ट करने में काफी मजा आया. करेक्ट. मुझे बहुत एंजॉयमेंट आई, एंड आई फील वही चीज सब लोगों को आई होगी. एंड आई फील द सेशन वाज रियली अमेजिंग, गाइस. लाइक what do you guys think about the session? मजा आया नहीं आया आप Yeah, सबको? definitely. Glowing. It More of was really very valuable and enriching. exactly. ऐश्वर्या, विवेक, उषा, Examples are श्रीकार. truly amazing. Like real life connect हो जाता है. Correct. So thank you so much, Nivedita. Let's sit together and let's talk more about how we can actually can collaborate, right? Yeah, Yeah, definitely. yeah, And amazing, definitely, yeah. I mean, for me, right? I mean, I hope see, you also enjoyed the session, bro. I hope you hundred enjoyed percent, the 100%. audience. Like, see, I want to see that day where I reach out to you guys and say, यार मेरे को अपनी कंपनी में रेफर कर देगा क्या? Correct. ठीक है, cool यार. Thank you guys. है Thank ना? you so much, Nivedita. Thank you so much. Thank you. Hope to connect with you soon. Yeah. Yeah, bye. thank you. Bye, guys. Bye. Ritik, हाँ shall we हाँ drop? हाँ just thank you guys, thanks a lot, thank you Nivedita, thank you so much. Thank you. Stay safe guys, stay safe, take care guys, bye. Bye. ब्रदर आप रहना जरा ना सेशन में. ऐश्वर्या, आई होप यू लाइक द सेशन. चलो ठीक है. हाय ब्रदर, कैसा लगा सेशन आपको? हेलो. Awesome है man. मजा आया? मजा आया, लेकिन मेरे पास तो बहुत क्वेश्चन था, लेकिन मैं अटेंड करूंगा, मैं हाँ नहीं चाहता था। वो तो दोबारा नहीं, मैं दोबारा नहीं से आपको. चाहता था कि दूसरे कैंडिडेट का टाइम में वेस्ट करूं, तो इसीलिए मैं नहीं अभी तो आपको मतलब चांस मिलेगा यार, अभी तो आपकी स्टार्टिंग है. दैट्स व्हाट माय थिंकिंग वाज। मतलब आपको ये तो लगा ना कि भाई सही आ रहा है, सही जगह है, राइट? हाँ, और मतलब ये मुझे समझ में नहीं आई क्या गेस्ट ये था क्या, मतलब गेस्ट लेक्चर था क्या ये? नहीं मतलब एज अ जैसे अलग अलग कोहर्ट्स के लिए ऑनबोर्डेड होते हैं ना ट्रेनर्स, करेक्ट? तो ये ओके पहले ओके। किसी और के लिए ऑनबोर्डेड थे, राइट? सो हम पहले वर्कशॉप्स कंडक्ट करते थे इनके साथ. तो ओके ओके, काफी दैट्स चीजें वे हैं. इट वर्क्स, नाइस। हाँ सो तो मतलब ये डिपेंड्स, हम बल्समिंग के लिए कोई और मतलब भी आ यार, सकते हाँ हैं? मतलब एज इन हाँ यार, जो एक्सपर्ट होगा उसको लेके आएंगे ना. तो हाउ यू So जज देन, आई मीन इन बिटवीन मल्टीपल so no, पीपल? we already have done that, right? So we already have done that. ओके ओके ओके। हमारे पास स्पेसिफिक ट्रेनर्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि वो क्या टॉपिक्स पढ़ा सकते हैं. लेट्स अज्यूम जैसे आपको वाई फ्रेमिंग पढ़ा दिया, बट आपको बाल्समिक सीखना है, तो बाल्समिक के लिए मैं निवेदे को बुला लूंगा, या फिर कोई और भी ट्रेनर्स हैं जो बहुत सॉलिड हैं. ये तो तो मतलब ये भाई क्या, ये ये तो वायर बस फ्रेमिंग का एक ही मतलब सेशन होगा क्या, मतलब बल्समिंग का ये मतलब और तो फिर आज स्टार्टिंग था? देयर गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस सेशन. ये पहले भी सेशंस अटेंड कर चुके हैं स्टूडेंट सारे के सारे. ओके, आई डिड नॉट नो दैट, ओके फाइन। हाँ, ये सारे के सारे सेशंस अटेंड कर चुके हैं 6th वीक में अभी. तो ये पहले से सब कुछ कर चुके हैं. ओके फाइन फाइन फाइन। करेक्ट. ठीक है. चलो, ये बाल्समिक ब्रदर समझो, बाल्समिक एक टूल है, राइट? अगर हम आपको कोई और टूल भी सिखा रहे हैं, वो भी आप सीख सकते हो. इसका मतलब ये नहीं कि बाल्समिक ही टूल तो सीखना है. चेंज हो सकता है, मतलब हाँ एक हाँ वो रिपोर्टिंग की तरह है, आज आया हाँ टूल टूल्स. कल चेंज होगा, वो वो डिफरेंट चीज वो है। टूल्स में मत आना, बिकॉज आई नो कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है. बाल्समिक वॉज एन एक्स्ट्रा थिंग फॉर देम. आई नो कि बाल्समिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने टूल समझा दिया बाल्समिक. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट अ नॉर्मल टूल्स, वो भी टूल्स यूज करने आने चाहिए, बिकॉज कभी कभी बहुत चीजें होती हैं ब्रो. आई एम टेलिंग यू,
you're going to be getting a lot of information at the same time. Just assume कि जो हम आपके, just try to believe in me, right? जो भी मैं आपको चीज कराऊंगा वो आपके ही benefit के लिए है, because That's it's been a long time I have done that. I know कि कहाँ पे क्या चीज आपको fit बैठेगी. yeah, I'm assuming that. That's why I'm here. Otherwise, I could have I spent that much of Exactly, money. exactly. ठीक है, चलो brother, take One more care thing, man, stay. I'm asked before logging off. I'm just asking one हाँ question. हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Tomorrow I'll meet at 8 o'clock with the same link. Correct. Bro, so you're going to be joining with the same link, right? So at the same point of time we have a different मतलब मेरे Zoom में ही मेरे पास अलग अलग हैं जिसमें पासकोड चेंज होता है सिर्फ. Okay, fine. That's great. And another thing is that you have shared me that PDF that was only 2 page. I mean, intent. I mean, you know that part, or you just send नहीं नहीं, I mean, हाँ, wrong so bro तो solution नहीं शेयर करना था ना. solution? मतलब what he showed today is the solution that we're referring to. हाँ, it was a solution, right? Solution तो ना शो करना था आपको. Okay, I did not know the context actually. That's why I हाँ thought. हाँ हाँ, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी सिर्फ, वो सिर्फ Okay, okay. वो सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी. अगर आप नीचे देखोगे ना, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी सिर्फ उसके अंदर. नहीं नहीं, उसमें मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी नहीं था. प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, देख लो आप. मैं आपको दिखाता हूँ अभी. एक मिनट लाइन पे रुको. then I am wrong I think. नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, तभी तो मैंने आपको बोला ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. देखो, ये रही. अरे देख लो सामने सामने. हाँ 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 हाँ. ये तो रही. Okay, this much only you have to give. I did not know that this much small only. ये Okay, I प्रॉब्लम्स, got. अरे हाँ ब्रदर, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही बताएंगे ना. अभी तो सॉल्यूशन तो सेशन के अंदर होता है ना. Yeah, got your point. No. I'm thinking like this much. That's how you give the problem statement, right? So एग्जैक्टली मतलब okay. अगर मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा तो फायदा क्या है. Correct. करेक्ट, सो दैट्स द थिंग. चलो ब्रदर, टेक केयर, स्टे Yeah, सेफ. yeah. Bye. Yeah, Let's catch up tomorrow then. Bye. yeah. Sure, man. 8 o'clock. Bye. Bye, man.